દિવસ છે। મંચ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ મહિલા પશુપાલકોને। આજના પ્રસંગે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન ડેરી પ્રોડક્ટ્સની કીટ અર્પણ કરીને કરશો। डेरी प्रोडक्ट्सनी किट साथे सौ पशुपालक महिलाओं द्वारा भावभीનું સ્વાગત। મહિલા સશક્તિકરણનું બીડું જેમણે ઝડપ્યું છે એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું અભિવાદન। અને હવે મંચ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ સાબર ડેરીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને। આપ સૌ પણ ઝડપથી મંચ ઉપર પધારશો અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને એક વિશિષ્ટ સ્મૃતિ ચિહ્ન અર્પણ કરીને તેમનું સ્વાગત કરશો। आप ही तो है भारत, आत्मनिर्भर भारत, नूतन भारत के भाग्य विधाता। आ लागणी छे सौ बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सनी અને સહકારી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા પ્રત્યેક લોકોની વિશેષ રીતે સ્વાગત। જેમણે ભારતને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવ્યું છે તેવા આપણા સૌના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત। સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આજના પ્રસંગે આપણી વચ્ચે ગુજરાત રાજ્યના પ્રજાવત્સલ એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત છે। વિનંતી કરીએ છીએ ડેરીના ચેરમેન શ્રી શ્યામળભાઈ પટેલ તથા સાબરકાંઠા બેંકના ચેરમેન શ્રી જયંતિભાઈ પટેલને કે આપ બંને ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું સ્વાગત અભિવાદન સ્મૃતિ ચિહ્ન અને શાલ સાથે કરશો। માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત પુષ્પગુચ્છ સ્મૃતિ ચિહ્ન અને શાલ ઓઢાડીને કરી રહ્યા છે। ધન્યવાદ। અને હવે વિનંતી કરીએ છીએ ડેરીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ સર્વે શ્રી જયંતિભાઈ પટેલ, ભોગીલાલભાઈ પટેલ અને મણિભાઈ પટેલને કે આપ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો। ચેરમેન શ્રી શ્યામળભાઈ પટેલ સ્વાગત કરી રહ્યા છે શ્રી સી.આર. પાટીલનું। ફરી એકવાર આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવીએ છીએ। ધન્યવાદ। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સહકારિતાની શક્તિને ન ફક્ત ઓળખી છે પરંતુ તેને દેશના વિકાસમાં મહત્વનું સ્થાન આપવા એક આખા સહકાર મંત્રાલયનો પ્રારંભ પણ કરાવ્યો છે। આજે સાબર ડેરી સહકારથી સમૃદ્ધિના માર્ગ ઉપર નવા આયામો સર કરી રહી છે ત્યારે આમંત્રિત કરીએ છીએ સાબર ડેરીની ઉન્નતિ માટે પ્રયત્નશીલ એવા ચેરમેન શ્રી શ્યામળભાઈ પટેલને આપના સ્વાગત પ્રવચન માટે। બોલો ભારત માતા કી। ભાઈઓ બહેનો, આજે આપણું સદભાગ્ય છે કે આપણા ઓગણી આપણા જિલ્લામાં 3 લાખથી વધુ દૂધ ઉત્પાદક ગરીબ વંચિત આદિજાતિ દૂધ ઉત્પાદક ભાઈઓના ગૌરવ સમાન સાબર ડેરી સમગ્ર ભારતના શ્રેષ્ઠ અને અદ્યતન દૈનિક 120 મેટ્રિક ટન પાવડરની ક્ષમતાના દૂધ પ્લાન્ટ પાવડર પ્લાન્ટ તથા દૈનિક 3 લાખ લીટર દૂધ યુએસટી પ્લાન્ટના લોકાર્પણ માટે અને આપણે ચીજ અને વે પ્લાન્ટના
ભૂમિપૂજન માટે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને યુગ પુરુષ એવા સહકારી માર્ગદર્શન આપનારા આપણા ગુજરાતના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું સ્વાગત કરું છું, વંદન કરું છું અને નમન કરું છું. આજે આપણા ગુજરાતના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું સ્વાગત કરું છું. આપણા ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના પાર્ટીના પ્રમુખ આપણા માર્ગદર્શક સી આર પાટીલ સાહેબનું સ્વાગત કરું છું. આપણા રાજ્યના સહકાર મંત્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા સાહેબનું, આપણા પ્રભારી મંત્રી શ્રી ડિંડોર સાહેબનું, આપણા પશુપાલન મંત્રી શ્રી રાઘવજી સાહેબનું અને આપણા જિલ્લાના મંત્રી શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર સાહેબનું, આપણા ધારાસભ્યશ્રીઓ, આપણા ગુજકોમાસના ચેરમેન દિલીપભાઈ, બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ, એનડીડીબીના ચેરમેન મનીષભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ, જેઠાભાઈ સાહેબ, બનાસ પંચમહાલ ડેરીના ચેરમેન, ગુજરાત રાજ્યના અધ્યક્ષ અને ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો, આપણા બંને જિલ્લામાંથી લાખો પશુપાલક ભાઈઓ બહેનો, દૂધ સંઘના આમંત્રિત ચેરમેનશ્રીઓ, આમંત્રિત મહેમાનો અને ઉપસ્થિત સૌ બંને જિલ્લામાંથી લાખો પશુપાલકો ભાઈઓ બહેનોને, પત્રકાર મિત્રોને, મીડિયા મિત્રોને, ઉપસ્થિત સૌને હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, વંદન કરું છું, નમન કરું છું. આજે આપણી સાબર ડેરીની અંદર બંને પ્લાન્ટોના લોકાર્પણ માટે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ સાહેબ ઉપસ્થિત છે, ત્યારે બહેનોને મારી એક નમ્ર વિનંતી છે, રામ રામ પધારો કહી આપણે હાથ ઊંચા કરી સાહેબનું સ્વાગત કરીએ છીએ. ફરીથી સાહેબનું સ્વાગત કરીએ છીએ. આજે આપણી સાબર ડેરીનો 58 વર્ષના ઇતિહાસમાં આપણા દેશના વડાપ્રધાન પ્રથમવાર આપણી સાબર ડેરીની મુલાકાતે આવ્યા છે. આપણા સૌના માટે આનંદ અને ગૌરવની વાત છે. સાહેબ ઉપસ્થિત રહી આપણું માન મોભો અને ગૌરવ વધાર્યું છે. એ બદલ લાખો પશુપાલકો વતી સાહેબને કોટી કોટી વંદન કરું, નમન કરું છું. આજે સાબર ડેરીની ઐતિહાસિક વાત કરીએ તો શરૂઆતમાં 2002ના વર્ષમાં સાહેબ અમારા પાસે 3 લાખ લીટર દૂધની ક્ષમતા હતી અને આજે અમે 33 લાખ લીટર દૂધ દૈનિક સંપાદન કરી રહ્યા છીએ. આ 20 વર્ષની અંદર 30 લાખનો વધારો થયો છે. સર, સાબર ડેરીના ઇતિહાસની અંદર સર એ વખતે અમે 165 રૂપિયા કિલો ફેટે ભાવ આપતા હતા. ચાલુ વર્ષે અમે સાબર ડેરીના પશુપાલકોને કિલો ફેટે 860 રૂપિયા ભાવ ચૂકવ્યા છે. સાહેબ, આ વર્ષે અમારે 6,800 કરોડનું વાર્ષિક ટર્નઓવર સાબર ડેરીનું થયું છે. ઇતિહાસની અંદર સારામાં સારું સાહેબ આ વર્ષે સાબર ડેરીનું ટર્નઓવર થયું છે. સાહેબ, આપણે 23/9/2007માં સાબર ડેરીની મુલાકાતે પ્લાન્ટના લોકાર્પણ માટે આવ્યા, ત્યારે તમે અમને જે માર્ગદર્શન સૂચન આપ્યું હતું એમાં મહિલા ભાગીદારી, મહિલા જાગૃતિ, સશક્તિકરણ માટે જે આપે અમને માર્ગદર્શન આપ્યું એ પ્રમાણે જિલ્લાની અંદર અમે 328 મહિલા મંડળીને સ્થાપિત કરી છે અને 1,23,000 મહિલા સભાસદો અમારી આ દૂધ મંડીના સભાસદ બની દૂધ સંઘ સાથે સંકળાયેલા છે. સાહેબ, બીજું આપણે જે ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે અમારી બહેનો પરિશ્રમની પરીકાષ્ઠા સુધીની મહેનત કરી ખૂબ મોટું યોગદાન આપી રહી છે. સાહેબ, જ્યારે આપણે સાબર ડેરીના પગલાં પાડ્યા 2021માં એનિમલ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન વખતે પણ આપ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એ વખતે સાહેબ પણ આપણે ઘણું માર્ગદર્શન બંને જિલ્લા માટે આપ્યું હતું. અમારો આદિવાસી વિસ્તાર છે, એમાં આપના સૂચન પ્રમાણે દરેક ખેતી ક્ષેત્રે, પશુપાલન ક્ષેત્રે પૂરેપૂરો અમલ કરી અમારા બંને જિલ્લાને આપનું જે સપનું છે કે ખેતીની આવક બમણી કરવી જોઈએ, પશુપાલનના ધંધામાં પણ આવક બમણી થવી જોઈએ, એ દિશામાં હર હંમેશા અમે આગળ વધ્યા છે. સાહેબ, સાબર ડેરી ગુજરાત સિવાય બહાર રાજસ્થાન, હરિયાણા, પંજાબ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલુંગી, મહારાષ્ટ્ર આ બધા રાજ્યોની અંદર દૂધ એકત્રિત કરવાનું કામ કરે છે અને તેના ખેડૂતોને પણ સારા ભાવ આપવા માટે હર હંમેશા પ્રયત્ન છીએ. સાહેબ, ચાલુ વર્ષે અમારા જિલ્લામાં જે દૂધ ભટ્ટા સભાસદ ભાઈઓ છે એમની 3 વર્ષની દીકરીથી 10 વર્ષ સુધી દીકરીની 250 રૂપિયા પ્રથમ હપ્તો સાબર ડેરી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી ભરે છે. એ રીતે અમે 5,000 સુકન્યા ખાતામાં બહેનોનો ખાતો ખોલાવ્યો છે અને 20,000
સુધી અમે પહોંચવાનું અમારું લક્ષ્યાંક છે. સાહેબ, આપે જે નિર્ણયો કરો, સૂચન કરો છો એ પ્રમાણે ફેડરેશન, દૂધ સંઘો, પશુપાલકો માટે બંને સંસ્થાઓ, સંઘ અને ફેડરેશન આપણા અમલ પ્રમાણે આગળ વધીએ છીએ. એનડીડીબીના માર્ગદર્શન હેઠળ દૂધ સંઘો સારી રીતે કાર્યરત છે. મધુમાખીનો પણ ઉછેર આ વર્ષે અમે ચાલુ કર્યો છે. સાહેબ, આપના જે અનુરાગ પ્રમાણે, આપના જે આદેશ પ્રમાણે દૂધ સંઘો કાર્યરત કરી પશુપાલકોની ઓર્ગેનાઇઝ ખેતી તરફ પણ લઈ જાય છે. અને એનડીડીબી મારફતે ટ્રેનિંગ આપીએ, ક્લાસનું પણ અમે પ્લાનિંગ કરી 400 જેટલા ખેડૂતોને તૈયાર કર્યા છે. અને દરેક ગામની અંદર પ્રાકૃતિક ખેતી તો કરતા જ હોય છે, ઓર્ગેનાઇઝ ખેતી ઉપર આગળ વધ્યા છીએ. અને ફેડરેશનના માધ્યમથી લેબોરેટરી થાય એટલે એમાં પણ અમૂલ મારફતે આપના સૂચન પ્રમાણે ખેડૂત પાસેથી જેમ દૂધ લઈ આવે છે એ રીતે અનાજ પણ ખરીદી અને એનું માર્કેટિંગ અમૂલ ફેડરેશન કરશે એ દિશામાં આપના માર્ગદર્શન પણ આગળ વધી રહ્યા છીએ. સાહેબ, આપના દૂધ ઉત્પાદકો, દૂધ મંડળીઓને આધુનિક સંશોધનના પ્રમાણે સરકાર, ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર તરફથી અમારી મંડળીઓ અને દૂધ સંઘમાં 100 કરોડ જેટલી બંને સરકારો તરફથી અમારી સહાય તરીકે મળ્યા છે. એ મારા માટે આનંદ અને ગૌરવની વાત છે. સાહેબ, આપે 58 વર્ષના ઇતિહાસમાં ભારત દેશની સરકારે જે કાર્યરત કામગીરી ખેડૂતો માટે, પશુપાલકોએ નહોતું કર્યું એ આપણા 100 વર્ષના શાસનની અંદર આપ કરી બતાવ્યું. એ અમારા પશુપાલકો માટે એક આનંદની વાત છે. સાહેબ, આપ કોરોનાના મહામારીમાં જોઈએ તો આપે આ દૂધના ધંધા માટે જે ટ્રાન્સફર માટે, જે માર્કેટિંગ માટે આપી અમને છૂટ આપી હતી, એના કારણે અમારા ગામડા જીવનની અંદર આખું વિશ્વ, આખા શહેરો તકલીફમાં હતા, પણ ગામડા જીવનની અંદર કોઈ દિવસ તકલીફ પડી નથી. તે સાહેબ આપનો આભાર છે. આપે જે નિર્ણયો કર્યા ખેડૂતો માટે અને પશુપાલકો માટે, આપ સૌ નિર્ણયથી અમારા પશુપાલકોનું આવક બમણી થઈ છે. આપનું સપનું સાકાર થાય. આપણા વિશ્વના એક લીડર તરીકે સાહેબ આગળ આવ્યા છો. જે ગીતામાં કહ્યું છે કે અદાય અદાહી યોગ્ય છે ગાલિનદ ભવતી, એ કૃષ્ણ ભગવાનના કર્મયોગી જીવન અને રામચંદ્ર ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ બંને નચિકેતાનો આ દેશ છે. અને સ્વામી વિવેકાનંદ જેવા યોગ પુરુષો એ રીતે સાહેબ આપણા ભારત દેશની અંદર જન્મ લઈ આ ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. સાહેબ, કોટી કોટી આપને વંદન કરી નમન કરું છું. મારું ભાષણ પૂરું કરું છું. જય જય ગરીબ ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર ચેરમેન શ્રી. દીકરીઓના જન્મ, શિક્ષણ અને સશક્તિકરણને હંમેશા પ્રાધાન્ય આપનાર પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ શરૂ કરાવેલી સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચે એ માટે સાબર ડેરીએ એક નવી પહેલ કરી છે. ડેરી પશુપાલક પરિવારની દીકરીઓને યોજનાના લાભ માટે પહેલો ફાળો ડેરી તરફથી જમા કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. સાદર વિનંતી કરીએ છીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ લાભાર્થી દીકરીઓને સન્માનપત્ર અને પાસબુક અર્પણ કરશો. મંચ ઉપર આમંત્રિત કરીએ છીએ લાભાર્થીઓને. હિશા પિનાકીનભાઈ પટેલ. લગભગ 20,000થી વધુ કન્યાઓને આ લાભમાં આવરી લેવાશે, પરંતુ આજે પ્રતિકાત્મક રીતે 5 દીકરીઓને આ મંચ ઉપરથી સન્માનપત્ર અર્પણ થઈ રહ્યું છે. બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ ની શરૂઆત જેમણે ગુજરાતમાં કરાવી હતી અને આજે દેશભરમાં દીકરીઓના શિક્ષણ માટે, તેમના સશક્તિકરણ માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી વિશેષ ધ્યાન આપતા હોય છે. ત્યારે આ દીકરીઓને લાગણીસભર રીતે સંવાદ કરીને તેમને સન્માનિત કરી રહ્યા છે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. આ છે ભુવનેશ્વરી કુમારી અને ત્યાર પછી મહેશ્વરી કુમારી ભાવુસિંહ ચૌહાણ. ત્યાર પછી કશ્યપ કુમારી કલ્પેશભાઈ અસારી. અને પીહુ હાર્દિકભાઈ પટેલ. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની આ લાભાર્થી દીકરીઓ હેતપૂર્વક આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ તેમને આ પ્રશસ્તિ પત્ર એનાયત કર્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર.
દૂધ ઉત્પાદન એ ફક્ત શ્વેત ક્રાંતિ જ નથી, પરંતુ ગ્રામ લક્ષ્મીના આર્થિક સામાજિક સશક્તિકરણની મૂક ક્રાંતિ પણ છે. આજના અવસરે હવે વિનંતી કરીએ છીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનાર પ્રગતિશીલ મહિલા સભાસદોને સન્માનિત કરશો. પારુલબેન બિપિનભાઈ પટેલ. મંચ પર આમંત્રિત કરીએ છીએ પ્રગતિશીલ પશુપાલક મહિલા ખેડૂતોને. પારુલબેન બિપિનભાઈ પટેલ તેમને પ્રશસ્તિ પત્ર અને સ્મૃતિચિહ્ન દ્વારા તેમનું સન્માન કરી રહ્યા છે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. ચાંદીનો સિક્કો ભેટ આપી રહ્યા છે. ત્યાર પછી નૈનાબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ પટેલ. ત્યાર પછી ચેતનાબેન ભૂપેન્દ્રકુમાર પટેલ. પાયલબેન અશ્વિનકુમાર ચૌહાણ. અને તારાબેન શામળભાઈ પટેલ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સૌ પ્રગતિશીલ મહિલા સભાસદો અને ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવને સહકારથી સમૃદ્ધિનો ઉત્સવ બનાવવાના શુભ સંકલ્પ સાથે આજે આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ. ત્યારે હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલને આપની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરવા માટે પધારશો. ભારત માતા કી. આજના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા સૌના લાડીલા આપણા દેશના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, ગુજરાત રાજ્યના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ડાયસ પર ઉપસ્થિત સૌ રાજ્ય સરકારના મંત્રીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સૌ આગેવાનો, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીં ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓ અને બહેનો. દૂધ ઉત્પાદક એક પ્રકારની નવી ઇન્ડસ્ટ્રી બની ગઈ છે. એના જ આધાર પર ડેરીઓ પણ ચાલતી હોય છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આજે બધી બહેનોને પૂછતા હતા કે તમે જે કંઈ કરો છો એમાંથી કોઈ પ્રેરણા લેવા માટે, કોઈ સમજવા માટે કોઈ આવે છે કે કેમ? મારે આપ સૌને કહેવું છે કે મેં આપનામાંથી પ્રેરણા લીધી હતી. બનાસ અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં લગભગ 10 વર્ષ પહેલા જ્યારે સર્વે કરાયો હતો ત્યારે કે આ વિસ્તારમાં કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નથી, આ વિસ્તારમાં કોઈ ખેતી વિશેષ થતી નથી. એવા સમયે પણ આ વિસ્તારમાં સમૃદ્ધિ કેમ છે? અને એનું કારણ હતું દૂધ ઉત્પાદન. અને દૂધ ઉત્પાદનનું સૌથી મોટું કામ એ બહેનો કરતી હતી, ભાઈઓ તો રાજકારણ કરતા હતા. પણ આ દૂધ ઉત્પાદનને કારણે તમારામાંથી પ્રેરણા લઈને મેં પણ 700 ભેંસો અને 100 ગાયનો તબેલો બનાવ્યો હતો અને અદ્યતન બનાવ્યો હતો. એમને ગરમીને લાગે એટલા માટે ફોગસ લગાવ્યા હતા કે 25ની ગરમીમાં આ પશુ રહે. એમના માટે તળાવ બનાવ્યા હતા, એમના માટે બંને ટાઈમ સંગીત પણ વગાડતા હતા અને એ પ્રમાણે ખૂબ સારી વ્યવસ્થા પણ કરી હતી. પરંતુ તમે બધું જાતે કરી શકો છો, અમે નથી કરી શકતા. એટલા માટે અમે લગભગ 5-6 વર્ષ પહેલા મારે એમાંથી બહાર નીકળી જવું પડ્યું. પરંતુ મેં તમારા જ્યારે અભ્યાસ કર્યો હતો ત્યારે જ મને લાગતું હતું કે આ દેશની અંદર જો બધી જ બહેનો ખેતીની સાથે પૂરક જો એમની સાથે પશુપાલન શીખી જાય અને પશુપાલન કરે, ક્યારે એના ઘરમાં ગરીબી ના આવે, ક્યારે એને પોતાના પતિ પાસે ઘર ખર્ચ માટે હાથ લંબાવવો નહીં પડે. અને એટલા જ માટે બહેનોને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે જે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જે પ્રયત્ન કરે છે એ પ્રયત્ન તમે પહેલાથી શરૂ કર્યો છે. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આ ડેરી જો તમારું દૂધ લઈને એને પ્રોસેસ કરીને એને માર્કેટમાં લઈ જવા માટે માધ્યમ તરીકે જો ડેરી ના હોય તો મને લાગે છે કે દૂધ ઉત્પાદકોનું દૂધ જે પહેલા ગામોમાં વાટકા વ્યવહાર ચાલતો હતો, દૂધનું કે છાશનું વેચાણ એ લગભગ નહિવત હતું.
એવા સમયમાં જ્યારે આજે બાળકોને પણ દૂધ આપતા મુશ્કેલી થાય છે, સાહેબે પોતે પણ એક અનુભવ કહ્યો કે મારે જ્યારે દૂધ જરૂર હોય તમારે સાથે લઈને પ્રવાસ કરવો પડતો હતો આ જિલ્લાઓમાં. એવી સ્થિતિ એટલા માટે થઈ કે આવી ડેરીઓમાં તમે દૂધ ભરતા હતા, એમાંથી તમને એમાંથી ઉત્પાદન થતું હતું અને ધન ઉપાર્જન માટે જે રીતે આ એક વ્યવસ્થા ઊભી થઈ છે અને ડેરી જે માધ્યમ બન્યું છે અને ડેરી જે રીતે હવે આધુનિક તરફ આગળ વધી રહી છે, ત્યારે આપ સૌને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને દૂધનું ઉત્પાદન વધારવું અને એનો ભાવ પણ વધારે મળે એ માટે ડેરી અને આપના સંયુક્ત પ્રયત્નને કારણે ખૂબ ખૂબ સફળતા આપ સૌને મળશે એવો મને વિશ્વાસ છે. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા સાથે મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય જય ગરી ગુજરાત, ભારત માતા કી. ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુજરાતની છેલ્લા 2 દાયકાથી વધુ સમયની ઉજ્જવળ વિકાસ યાત્રાને પૂરી કર્તવ્ય નિષ્ઠાથી આગળ વધારનાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આત્મનિર્ભર ગુજરાત થકી આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણ માટે સંકલ્પબદ્ધ છે. સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આપના પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. સહકારથી સમૃદ્ધિના સૂત્રને ખરા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરતા સાબર ડેરી દ્વારા આયોજિત 120 મેટ્રિક ટન પ્રતિદિન ક્ષમતા ધરાવતા આધુનિક દૂધના મેગા પાવડર પ્લાન્ટ 125 કરોડના ખર્ચે પ્રતિદિન 3 લાખ લીટર કેપેસિટી ધરાવતા મિલ્ક પેકેજિંગ પ્લાન્ટ તેમજ 600 કરોડના ખર્ચે આકાર પામનાર સાબર ચીઝ પ્લાન્ટના લોકાર્પણ પ્રસંગે આપણી વચ્ચે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત માં ભારતીને પરમ વૈભવના શિખરે લઈ જવાના અહર્નિશ કાર્યરત ભારતના હૃદય સમ્રાટ ગુજરાતના પનોતા પુત્ર આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલજી, રાજ્ય સરકારના મારા સાથી મંત્રીશ્રીઓ, ડેરીના ચેરમેન શ્રી શામળભાઈ પટેલ, સાંસદ સભ્યશ્રી, ધારાસભ્યશ્રીઓ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ, સહકારી સંસ્થાના ચેરમેનશ્રીઓ તથા ડિરેક્ટરશ્રીઓ, સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણીશ્રીઓ, દૂધ ઉત્પાદકો, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત નાગરિક ભાઈઓ બહેનો અને યુવાનો અને પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આજે આપણે સૌને ગૌરવ છે કે સાબરકાંઠા અરવલ્લીના પશુપાલકોની જીવાદોરી સમાન સાબર ડેરીના 130 કરોડના વિવિધ પ્લાન્ટના લોકાર્પણ વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે આજે થયા છે. દેશને સહકારથી સમૃદ્ધિનો માર્ગ ચીંધનાર ગુજરાતની ધરા ઉપર દૂધની ધારા અવિરત વહેતી રાખવાના આ પ્રકલ્પો છે. ગુજરાતની પાછલા 2 દાયકાની વિકાસ યાત્રામાં સહકારી ક્ષેત્રનું ખૂબ મોટું યોગદાન રહ્યું છે. આ એ ધરતી છે જ્યાં આદિવાસીઓએ અંગ્રેજો સામે બાયો ચડાવી આઝાદીની ક્રાંતિમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું હતું. પાલ દળગવ વાવ ખાતેના હજારો આદિવાસીઓના બલિદાને આજે પણ આપણે ભૂલ્યા નથી. આવા અનેક ક્રાંતિવીરોની યાદ સાથે આખો દેશ આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈની આગેવાનીમાં આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ આવા વીર શહીદોની સ્મૃતિ અને આપણા રાષ્ટ્રીય તિરંગાની આન બાન શાન પ્રત્યે જન જનમાં રાષ્ટ્રભાવ જગાવવાનું આહવાન કર્યું છે. આવનારી તારીખ 13 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન હર ઘર તિરંગા કાર્યક્રમમાં જોડાઈને ગુજરાતમાં આ સાબરકાંઠા જિલ્લા સહિત તમામ જિલ્લા નગરોમાં 1 કરોડ ઘરો ઉપર તિરંગો લહેરાવવાનો આપણો સંકલ્પ છે. આઝાદીના અમૃત પર્વે ગુજરાતને નવા ડેરી પ્લાન્ટની ભેટ વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે મળી રહી છે. સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને ઉત્તર ગુજરાત માટે આ ભેટ શ્વેત ક્રાંતિનો અમૃતકાળ બનશે. ગુજરાતે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં વિકાસની હરણફાળ ભરી છે. હવે તો ગુજરાતને ડબલ એન્જિન સરકારનો બેવડો લાભ વિકાસ રાહે તેજ રફતારથી આગળ વધવા માટે મળી રહ્યો છે. ગુજરાતે સહકારી દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રથી માંડીને ઉદ્યોગ, વેપાર, ખેતી હરેક ક્ષેત્રે વિકાસના નવા પરિણામો હાંસલ કર્યા છે. રાજ્યમાં દૂધ ઉત્પાદનોની સંખ્યા 2 દાયકામાં 21 લાખથી વધીને
36 લાખ સુધી પહોંચી છે. સાબર ડેરી પણ આ દૂધ સહકારી પ્રવૃત્તિમાં અગ્રેસર રહી ઉત્તર ગુજરાતને ઉત્તમ ગુજરાત બનાવવાની નેમ સાકાર કરી રહી છે. આ જિલ્લાના સહકારી અગ્રણીઓ ભુરાભાઈ પટેલ, ગોપાળભાઈ પટેલ અને અંબુભાઈ પટેલની દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી 1964માં માત્ર 19 ગામડાથી દૂધ મંડળી અને 5100 લીટર દૂધ સંપાદનથી આ ડેરી શરૂ થઈ હતી. આજે 1800 દૂધ મંડળીઓ પાસેથી રોજના 40 લાખ લીટર દૂધ સંપાદન કરીને રોજ 10 કરોડ રૂપિયા પશુપાલકોને વિતરણ કરવાનું વિશાળ વટવૃક્ષ આ ડેરી બની છે. ગુજરાત બહાર રોહતકમાં પણ આ ડેરીનો પ્લાન્ટ છે. સાથે સાથે રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, હરિયાણા અને આંધ્રપ્રદેશના પશુપાલકોનું દૂધ પણ સાબર ડેરી ત્યાંથી સંપાદન કરી રાજ્યના પશુપાલકોને દૂધના નાણાં ચૂકવે છે. મિત્રો, અત્યારે ફૂડ પ્રોસેસિંગથી વેલ્યુ એડિશનનો જમાનો છે. રૂપિયા 305 કરોડના પાવડર પ્લાન્ટ, રૂપિયા 125 કરોડના ટેટ્રાપેક પ્લાન્ટ અને રૂપિયા 605 કરોડનો ચીઝ પ્લાન્ટ એ વેલ્યુ એડિશન ક્ષેત્રે સાબર ડેરીની આગવી પહેલ છે. માત્ર દૂધ, દહીં કે છાશ નહીં, પણ અન્ય આવશ્યક ઉત્પાદન કરીને પશુપાલકો અને ડેરી બંનેની આવક વધારવાનો આ અભિગમ છે. ખેતી, પશુપાલન, દૂધ ઉત્પાદન આ ત્રણેય ક્ષેત્રોને વધુ સમૃદ્ધ કરવા વડાપ્રધાન શ્રી સતત આપણું માર્ગદર્શન કરતા રહે છે. દેશના એક એક પ્રજાજનનું હિત વડાપ્રધાનશ્રીના હિયે વસેલું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના આગવા અને સંવેદનશીલ નેતૃત્વનું જ એ પરિણામ છે કે ગુજરાત અને દેશ વિકાસના માર્ગે હરણફાળ ભળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ, સિંચાઈ માટે રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ અને ખેડૂતો પશુપાલકોની મહેનતના ત્રિવેણી સંગમથી આ વર્ષે રાજ્યમાં ખેતી અને પશુપાલન નવા રેકોર્ડ અંકિત કરશે તેવી આપણને સૌને આશા છે. આવતીકાલથી પવિત્ર શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. શિવજીની ઉપાસનાનો, આરાધનાનો આ મહિનો છે. ગુજરાતના પશુપાલન ક્ષેત્રની ઉન્નતિ અને વિકાસ માટે શિવજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. ફરી એકવાર ઉત્તર ગુજરાતને શ્વેત ક્રાંતિમાં અગ્રેસર બનાવવાની આ ભેટ માટે વડાપ્રધાનશ્રીનો હૃદયપૂર્વક આભાર માની વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. દૂધની શુદ્ધતા, વહીવટમાં પારદર્શિતા અને સહકારી પ્રગતિશીલતા એટલે સાબર ડેરીની સફળતા. ફક્ત 19 દૂધ મંડળીઓથી શરૂ થયેલી સાબર ડેરી આજે 1800થી વધુ દૂધ મંડળીઓનો વિશાળ પરિવાર બની ચૂક્યો છે. આવો નિહાળીએ સાબર ડેરીની વિકાસ ગાથાને વર્ણવતી એક નાનકડી ફિલ્મ. गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित साबर डेयरी आज देश की अग्रणी डेयरी के रूप में जानी जाती है। वर्ष 1964 में श्री भूरा भाई पटेल, श्री गोपाल भाई पटेल और श्री अंबू भाई पटेल तथा डॉक्टर वी कुरियन के अथक प्रयासों से सिर्फ 19 दुग्ध उत्पादक सोसाइटी से शुरू साबर डेयरी से आज जुड़े हैं करीब 1800 सोसाइटीज के लाखों दूध उत्पादक किसान। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तथा डबल इंजन सरकार के द्वारा मजबूत डेयरी सेक्टर के लिए उठाए गए कदमों से और साबर डेयरी व अमूल संस्थान के उच्च प्रबंधन से साबरकांठा जिले के लाखों किसान लिख रहे हैं तरक्की और आत्मनिर्भरता की कहानियां। किसानों और पशुपालकों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलती साबर डेयरी आज गुजरात के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में आधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित कर चुकी है और लगातार नए उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु नए प्लांट स्थापित करने की ओर अग्रसर है। लाखों लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाती साबर डेयरी आज देश की तेज विकास यात्रा की अहम भागीदार के रूप में गर्व महसूस करती है। साबर डेयरी और अमूल के ग्रामीण विकास के प्रयासों के केंद्र में हमेशा रहा है लाखों महिलाओं का सशक्तिकरण। गांव-गांव आधुनिक डेयरी की तकनीक को पहुंचाकर महिलाओं को विकास यात्रा से जोड़ने के कार्य में
डेयरी हमेशा आगे रही है और भविष्य में भी इन्हीं लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। आज साबर डेयरी के नए प्लांट्स का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो रहा है। इसके लिए साबर डेयरी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। તો આ હતી સાબર ડેરીની સાફલ્ય ગાથાની એક નાનકડી ઝલક અને હવે નિહાળીએ આજે જેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું તે 120 મેટ્રિક ટન પ્રતિ દિવસની ક્ષમતાવાળા અત્યાધુનિક મિલ્ક પાવડર પ્લાન્ટની વિગતો ફિલ્મ સ્વરૂપે। अमूल और साबर डेयरी का 305 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक तकनीक आधारित मिल्क पाउडर प्लांट बनकर तैयार है। प्रतिदिन 120 मैट्रिक टन मिल्क पाउडर बनाने की क्षमता वाला प्लांट दूध उत्पादन ज्यादा होने की स्थिति में दूध को मिल्क पाउडर में परिवर्तित करेगा। इससे लाखों किसानों का आर्थिक हित सुनिश्चित होगा। ये प्लांट विदेशों में मिल्क पाउडर की मांग पूरी करेगा और देश के निर्यात में वृद्धि करने में योगदान देगा। आज साबरकांठा के लाखों दुग्ध उत्पादक किसान इस मिल्क पाउडर प्लांट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। સહકારિતાના સંસ્કાર અને વૈજ્ઞાનિક આવિષ્કાર એટલે યુએચટી મિલ્ક પ્લાન્ટ, જેનાથી દૂધ ઉત્પાદકોની સમૃદ્ધિમાં અને દૂધ નિકાસમાં વધારો થશે। સાદર વિનંતી કરીએ છીએ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને કે આપ વિસ્તૃતીકરણ પામેલા યુએચટી પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ રિમોટનું બટન દબાવી કરાવશો। साबर डेयरी का आधुनिक यूएचटी यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर तकनीक आधारित प्लांट दुग्ध प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। दूध उत्पादक किसानों के सपनों को पूरा करने में अमूल के इस प्रयास के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बना यूएचटी प्लांट लाखों दुग्ध उत्पादक सदस्यों के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साबर डेयरी इस प्लांट से 3 लाख लीटर यूएचटी प्रोसेस किया हुआ दूध प्रतिदिन देश के कोने कोने में अमूल के उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगी। इससे अमूल के उपभोक्ताओं की ताजा दूध की बढ़ती मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। ધન્યવાદ। પુનઃ વિનંતી કરીએ છીએ આપશ્રીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કે આપ રિમોટનું બટન દબાવી સાબર ડેરી ખાતે સ્થપાનાર અમૂલ ગ્રુપના ત્રીજા ચીઝ પ્લાન્ટ અને વી ડ્રાઇંગ પ્લાન્ટના ભૂમિ પૂજનની ઈ તકતીનું અનાવરણ કરશો। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा अत्याधुनिक चीज प्लांट के शिलान्यास के अवसर पर साबर डेयरी के लाखों दूध उत्पादक सदस्य आज गौरव महसूस कर रही हैं। आज चीज नए भारत के युवाओं के पसंदीदा भोजन का अंग बन चुका है। देश में अमूल चीज की बढ़ती मांग इसके लोकप्रिय होने का सबूत है और इसी मांग की आपूर्ति के लिए आज अमूल के तीसरे प्लांट की नींव रखी जा रही है। इससे साबर डेयरी के लाखों दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सीधा लाभ पहुंचेगा। अमूल के इस अत्याधुनिक प्लांट्स में बनी चीज को देश के कोने कोने में अमूल के करोड़ों कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अमूल परिवार अपनी भागीदारी के लिए सदैव तैयार है। ધન્યવાદ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી। ચળવળ હોય આઝાદીની કે સહકારિતાની, ગુજરાત પુણ્યભૂમિ રહી છે ક્રાંતિની। સહકારિતાનું વિચાર બીજ વાવનાર સરદાર સાહેબે દેશને ભેટ આપી શ્વેત ક્રાંતિની, તો આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ દેશને ભેટ આપી છે વિકાસ ક્રાંતિની। ભારતની આન બાન અને શાન એવા તિરંગાને પ્રત્યેક ભારતવાસીના ઘર પર લહેરાવવાનો સંકલ્પ અને વિશ્વ ફલક પર ભારતની ગરિમાને વધારવાનો પ્રકલ્પ, આવું કર્મઠ નેતૃત્વ જેમની ઓળખ છે અને જનજનની જરૂરિયાતોની જેમને પરખ છે, તેવા આપણા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સમગ્ર ભારતમાં વિકાસ, વિશ્વાસ અને પ્રયાસનો ત્રિરંગો લહેરાવ્યો છે। આવો આપણા સૌના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે આવકારીએ આજના પ્રસંગે આપના પ્રેરક માર્ગદર્શન માટે।
भारत माता की, भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय, मृदु एवं मक्कम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल, गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री जेठाभाई, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, साबर डेयरी के पदाधिकारी और इससे जुड़े तमाम किसान भाई बहन, पशुपालक भाई बहन, आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस मिल्क पाउडर प्लांट और एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन, उसमें एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। आज जिस नए प्लांट का भूमि पूजन हुआ है, वो भी साबर डेयरी के सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। मैं साबर डेयरी और इस सहकारी आंदोलन से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को, डेयरी के चेयरमैन को, डेयरी के सभी डायरेक्टर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। અને જ્યારે સાબર ડેરીની વાત આવે અને ભૂરાભાઈની યાદ ના આવે तो बात अधूरी रह जाए। भूराभाई पटेल ने दशकों पहले जो प्रयास शुरू किया था, वो आज लाखों लोगों का जीवन बदलने में मदद कर रहा है। અહીં સાબરકાંઠામાં આવીએ એટલે કઈ નવું ના લાગે, પણ રોજ કઈ નવું થતું દેખાય। સાબરકાંઠામાં કદાચ કોક જ એવો ભાગ હશે કે જ્યાં મારું જવાનું ન થયું હોય। અને સાબરકાંઠામાં આવીએ એટલે યાદ આવે બધું। બસ સ્ટેશન પર ઉભા હોઈએ, ખેડ 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 ખેડ, વડાલી વડાલી વડાલી, ઈડર વડાલી ખેડ ભીલોડા, હડો હડો હડો। અને આજે જયારે સાબરકાંઠા આવું તો એ આવાજ આજે પણ કાનમાં ગુંજતા હોય છે। અહીં મારા અનેક સાથી સહયોગો, અહીં આવો એટલે બધાને યાદ પણ આવે। કમનસીબે કેટલાક સાથીઓ આપણને છોડીને પરમાત્માને પ્યારા થઈ ગયા। અમારા શ્રીરામ સાંખલાનું નામ યાદ આવે, અમારા જયેન્દ્રસિંહભાઈ રાઠોડ, हमारे SM खाट, हमारा धीमंत पटेल, हमारा भाई गजानन प्रजापति, हमारा विनोद फलजीभाई नो केटला जूना साथियों, અને આજે પણ અનેક લોકોના ચહેરા
મારી સામે તરબડી રહ્યા છે. મારા વાલજીભાઈ હોય, અમારા પ્રવીણસિંહ દેવડા હોય, નાનો ભટકો પણ દોડે બહુ. हमारा अनेक साथियों, हमारा मोडासाમાં રાજાભાઈ યાદ है, अनेक लोगों ने याद, अनेक सगर परिवारों, એમની જોડે મારો ઘેરો નાતો. બહુ સન્માનીય નામ અમારા ડાયાભાઈ ભટ્ટ, મારા મૂળજીભાઈ પરમાર, અનેક વડીલો સાથીઓ, અનેકોની વચ્ચે કામ કર્યું. हमारा रमणीक भाई હોય કે અમારા જેમના ત્યાં અનેક વાર ઈડર આવું એટલે જઈએ અને અનેક પરિવારો સાથે મળવાનું થાય. પણ હવે તમે બધા એવી બધી જવાબદારીઓ આપી કે જૂના દિવસો યાદ કરીને આનંદ લેવાનો હોય છે. साथियों, 2 दशक पहले यहां क्या स्थितियां थी ये आप भी जानते हैं, मैंने भी भली भांति देखा है. आजकल हम गुजरात के कई हिस्सों में अति वर्षा की चुनौती से जूझ रहे हैं. लेकिन गुजराती को बारिश आना यही अपने आप में इतना बड़ा सुख और संतोष होता है जिसका अंदाज बाहर के लोगों को नहीं है. કારણ આપણે ત્યાં તો 10 વર્ષમાં 5 વર્ષ દુકાળ પડતો હોય, વરસાદ માટે વલખા મારતા હોઈએ અને જ્યારે ભરપૂર વરસાદ થાય તો મન પણ ભરાઈ જાય. અને દુષ્કાળની આ સ્થિતિનું પરિણામ શું? ખેતીમાં વરસાદ થાય તો માંડ એકાદ પાક લેવાય. પશુપાલન એ પણ થોડું ઘણું ઘાસચારો મળવાની મુશ્કેલી. અને પછી જો ભાઈ છોકરાઓને અહીંયા નથી રાખવા, છોકરાઓને શહેરમાં મોકલો, અમે અહીંયા ગામડામાં જિંદગી પૂરી કરી દઈશું. આ દિવસો આપણે જોયેલા છે. और उस समय मैंने संकल्प किया था, आप लोगों के भरोसे संकल्प किया था, आप लोगों के साथ सहयोग पर अटूट विश्वास लेकर के संकल्प किया था कि स्थिति को बदलना है. और इसलिए जैसे जैसे सिंचाई की सुविधाएं इसका गुजरात में विस्तार हुआ, वैसे वैसे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हमने बहुत विकास की अभिवृद्धि की और डेयरी ने उसे बहुत बड़ी ताकत दी. अर्थव्यवस्था को डेयरी ने स्थिरता भी दी, डेयरी ने सुरक्षा भी दी और डेयरी ने प्रगति के नए अवसर भी दिए. हमारा बता और दांतों की डेंटल ट्रीटमेंट तक की चिंता की थी. और आपको तो पता है, पशु आरोग्य मेले में कुछ गाय जब उनके पेट को काटते थे तो 15-15, 20-20 किलो प्लास्टिक का वेस्ट निकलता था और देखने वालों के आंख में पानी आ जाता था. અને એટલે જ આપણે
પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બંધ કરવાનું અભિયાન ચલાવ્યું છે ભાઈ. આ પ્લાસ્ટિક આપણા પશુઓ માટે દુશ્મન પુરવાર થાય છે. બીજી બાજુ પશુઓની ચિંતા, પશુઓ को चारा मिल सके, દાણ સારું મળે, પશુનો આહાર સારો મળે. અને આજે મને બહેનો એક આનંદની વાત કરી, शायद इसका प्रचार बहुत कम हुआ है. उन्होंने कहा कि हम पशु अगर बीमार होते हैं तो आजकल आयुर्वेदिक दवाई से हम पशुओं को ठीक करते हैं. यानी पशुओं के लिए जो हमारी परंपरागत दादी मां की परंपराएं घरों में रहती थी, वे पुनर्जीवित हुई है. आयुर्वेदिक दवाओं से पशु की देखभाल. मैं गुजरात के डेयरी क्षेत्र के लोगों का, साबर डेयरी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने पशुपालकों को आयुर्वेद दवा के द्वारा पशुओं की चिकित्सा का रास्ता और उसमें मदद की. આપણને ખબર છે, હું 2001 માં આવ્યો ત્યાં લોકો એમ કહેતા હતા કે સાહેબ સાંજે વાળું કરવા માટે તો વીજળી આપો. સાંજે વીજળી નહોતી મળતી ગુજરાતમાં. આપણે જ્યોતિગ્રામ યોજનાનું અભિયાન ચલાવ્યું. આજે 20-22 વર્ષના જે દીકરા દીકરીઓ હશે ને, એને તો ખબર નહીં હોય અંધારું કોને કહેવાય. અને ગુજરાતમાં જ્યોતિગ્રામ યોજના લાવ્યા. અને જ્યોતિગ્રામ યોજનાએ ખાલી ગુજરાતના ઘરોમાં અજવાળું કર્યું, ટીવી ચાલુ કર્યા એટલું નહીં, અમારા ગામડામાં ડેરીને મિલ્ક ચિલિંગ યુનિટ ઉભા કરવામાં આ વીજળીએ મોટામાં મોટી મદદ કરી. એના કારણે દૂધનું કલેક્શન વધ્યું અને દૂધ બગડતું બચ્યું. ગાડી આવે લેવા માટે ત્યાં સુધી ચિલિંગ પ્લાન્ટમાં દૂધ સચવાઈ રહે અને એના કારણે વેસ્ટેજ પણ બચવા માંડ્યો. આ વીજળીની તાકાત હતી, એના કારણે આ શક્ય બન્યું. गुजरात में बीते 2 दशक में जो व्यवस्थाएं तैयार हुई, आज उसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं. आज गुजरात का डेयरी मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है. साथियों, मुझे याद है मैं 2007 में भी यहां आया, 2011 में भी आया. उस समय मैंने प्रोसेसिंग प्लांट करने का एक कार्यक्रम किया था और उस दिन मैंने हमारे डेयरी के साथियों के साथ बात कही थी. मैंने कहा देखिए जी, आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए. और मुझे आज खुशी है कि दूध समितियों में महिलाओं को पहले ना के बराबर स्थान था, आज कम से कम 3 महिलाएं आज मंडी के उस डायरेक्टर के रूप में रहती हैं. वो मंडली को चलाती हैं और कुछ जगह पर तो पुरुषों से ज्यादा बहनें काम संभालती हैं. गुजरात में हमने ये भी नियम बनाया था और मैंने आज सब बहनें मिली तो पूछा. उस समय मैंने नियम बनाया था कि दूध भरने के लिए कोई भी आए, लेकिन दूध का पैसा किसी भी पुरुष को नहीं देना है. दूध का पैसा महिलाओं को ही मिलना चाहिए. और अगर महिलाओं के पास पैसे जाएंगे, पाई पाई का सही उपयोग होगा, परिवार की भलाई के लिए होगा, पशु के कल्याण के लिए होगा. और आज गुजरात में दूध का पेमेंट सिर्फ महिलाओं को मिलता है और उसके कारण मेरी महिलाओं, बहनों की, माताओं की ताकत भी बहुत बढ़ गई है. गुजरात में सहकारिता की एक समृद्ध परंपरा रही है और संस्कार भी है, तभी तो सहकार है, और सहकार है तभी तो समृद्धि है. दूध से जुड़े सहकारी आंदोलन को जो सफलता मिली है, इसका विस्तार अब हम खेती से जुड़े बाकी क्षेत्रों में भी कर रहे हैं. देश में आज 10,000 किसान उत्पादक संघ
एफपीओ, इसके निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इन एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी वैल्यू और सप्लाई चेन से सीधे जुड़ पाएंगे। इसका बहुत अधिक लाभ मेरे गुजरात के किसान भाई बहनों को होने वाला है। भाई और बहनों, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं, उसकी वजह से गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसानों की आय में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, इसकी वजह से भी काफी वृद्धि हुई है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जो भूमिहीन किसान है, जो सबसे गरीब होते हैं, उनकी आय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह बहुत छोटी जमीन वाले किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। यानी फसलों के अलावा आय के वैकल्पिक माध्यमों पर काम करने की रणनीति आज काम आ रही है। खादी और ग्रामोद्योग भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर गया है। यही कारण है कि बीते 8 वर्षों में इसी क्षेत्र से 1.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार गांव में बने। 2014 से पहले के 7-8 सालों की तुलना में बीते 8 सालों में મધુમક્ખીનો ઉછેર, મધનું ઉત્પાદન, અને મને તો સાબર ડેરીએ કહ્યું હવે અમે પણ આખા સાબરકાંઠામાં મધના ઉત્પાદન માટે ખેડૂતોને તૈયાર કરી રહ્યા છે, એમને બોક્સ આપી રહ્યા છીએ અને આટલા ટૂંકા ગાળામાં મધનું ઉત્પાદન લગભગ ડબલ થવા પહોંચ્યું છે, લગભગ ડબલ। આ એક વધારાની આવક। અને ખેતરમાં મધુમક્ખી હોય ને એટલે એ બી તમારા સાથીઓની જેમ કામ કરે, ખેત મજૂરની જેમ તમારી મદદ કરે। મધુમક્ખી ખેતીમાં પૂરક થાય એટલું જ નહીં, પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ બનાकर 10% થી વધારે આજે આપણે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ એને મેળવીએ છીએ। આ ઇથેનોલ બને છે કેવી રીતે? શેરડીના સાંઠામાંથી, શેરડીમાંથી, મકાઈમાંથી। એટલે અત્યાર સુધી ખાડીનું તેલ આવતું હતું, હવે એમાં ઝાડીનું તેલ પણ ભળવા માંડ્યું અને ખાડીનું ને ઝાડીનું તેલ મળીને આજે આપણા વાહનો દોડે છે અને पर्यावरण की रक्षा થાય। 2014 तक देश में 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। आज ये करीब 400 करोड़ लीटर तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। भाइयों और बहनों, खेती की लागत कम करने पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया, खाद के बंद पड़े कारखाने, उनको फिर से शुरू करना, नैनो फर्टिलाइजर पर काम करना। और नैनो फर्टिलाइजर तो એવું છે કે એક થેલો ભરીને જેટલું ખાતર લાવતા હો એટલું હવે એક બોટલમાં આવી જાય છે અને એટલો જ લાભ મળે પાછો। મહેનત ઓછી,
फायदो एवो ने एवो आज नैनो फर्टिलाइजर पर काम થઈ રહ્યું છે। बीते कुछ महीनों में पूरी दुनिया में यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए। દુનિયામાંથી આપણે બહારથી લાવવું પડે છે યુરિયા, ફર્ટિલાઇઝર બહારથી લાવવું પડે છે। અનેક ગણા ભાવ વધી ગયા અચાનક। પરંતુ દિલ્હીમાં બેઠેલી તમારી આ સરકારે આટલા બધા ખાતરના ભાવ વધ્યા પણ એનું ભારણ મારા ખેડૂતો ઉપર ન આવવા દીધું। એનો બોજ આજે ભારત સરકાર વહન કરી રહી છે। યુરિયાની 50 કિલોની બેગ ये सरकार ने 3,500 રૂપિયામાં પડે। जरा बोलशो તમે કેટલામાં? 3,500 રૂપિયાની એક થેલી। કેટલા? जरा बोलो ने, याद रहे, કામમાં આવે। 3,500 રૂપિયા કેટલા? અને સરકાર ખેડૂતોને કેટલામાં આપે છે? 300 રૂપિયામાં। 3,500 ની થેલી મારા કિસાન ભાઈઓને બોજ ન પડે, આખા દેશમાં માત્ર 300 રૂપિયામાં આપવામાં આવે છે। એ જ પ્રકારે डीएपी के 50 किलो के बैग पर पहले सरकार 500 रुपये का बोझ वहन करती थी। सरकार पर 500 रुपये का बोझ आता था। आज वो दुनिया में महंगाई बढ़ने के कारण आज सरकार को 2500 रुपया का बोझ वहन करना पड़ता है, लेकिन किसानों के सर पे हम बोझ जाने नहीं देते। साथियों, इन तमाम योजनाओं का लाभ गुजरात किसानों को भी मिल रहा है। बीते वर्षों में अरवल्ली के 50,000 से अधिक किसानों के खेत माइक्रो इरिगेशन की सुविधा से जुड़ चुके हैं। અને હું ખાસ અરવલ્લીના મારા ખેડૂત ભાઈઓને અભિનંદન આપું છું આ કામ માથે લેવા બદલ। आज अरवल्ली के अनेक गांव ऐसे हैं जहां किसान 100% टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर रहा है। सुजलाम सुफलाम योजना से साबरकांठा की अनेक तहसीलों में पानी पहुंचा है, जहां पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाथमती नहर, उसका सुंदरीकरण प्रोजेक्ट के पूरा होने से पूरे क्षेत्र की सुंदरता बढ़ी है। शहर में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर घर जल अभियान के तहत भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, आज साबरकांठा और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। रेलवे लाइनों चौड़ीकरण, रेलवेना ब्रिज बनावाना, हाईवे पહોળા કરવાના, हाईवे ने दूर सुधी આગળ લઈ જવાના। આપણું આ શામળાજી મોડાસા 150 કિલોમીટર લાંબી 4 લેન રોડ આગળ જઈને દક્ષિણ ગુજરાતને સીધી જોડાણ કરી દેશે। દક્ષિણ ગુજરાત મધ્ય ગુજરાત સાથે આ મારું સાબરકાંઠા જોડાઈ જશે। અને આના કારણે ખેડબ્રહ્મા હોય, ભિલોડા હોય, માલપુર હોય, મેઘરજ હોય, આ મારો આખો આદિવાસી પટ્ટો આ વિકાસની અંદર તેજીથી જોડાઈ રહ્યો છે। હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા બ્રોડગેજ લાઈન, એના પ્રોજેક્ટ પર તેજ ગતિથી કામ ચાલી રહ્યું છે। ભાઈઓ બહેનો, તમને યાદ હશે કે આપણે અહીંયા હેમનગરથી, હિંમતનગરથી મહેસાણા જવું હોય તો 7 વાર વિચાર કરીએ, ભાઈ આ આવા રોડ ઉપર ક્યારે જઈને ક્યારે પહોંચીશ। કલાકો લાગી જતા હતા અને હવે આ નવા રોડ બનવાના કારણે 3 સાડા 3 કલાકમાં ફટફટાટ ત્યાં પહોંચી જાય છે।
હિંમતનગર, મહેસાણા, વિજાપુર આમ ધડાધડ પહોંચી જશે. હિંમતનગર થી અંબાજી 4 લેન સડક બની અને માં અંબાના દર્શન માટે આવનારા લોકો હવે બધા ઉત્તર ગુજરાત જવાનું હોય, દક્ષિણ ગુજરાત કે મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદના લોકો આ જ રસ્તો પકડે એટલે આજુબાજુના પણ લોકોને રોજી રોટી મળી રહે. અને હવે તો શામળાજીથી અમદાવાદ 6 લાઈનનો હાઈવે એ બનાવવાનું કામ તેજીથી ચાલી રહ્યું છે. 1300 કરોડ રૂપિયાના પર ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હિંમતનગરમાં મેડિકલ કોલેજ અને આપણને કોરોનાની લડાઈમાં આ મેડિકલ કોલેજ કેટલી બધી કામમાં આવી, કેટલા આશીર્વાદ મળ્યા ये તમે જાણો છો, હું જાણું છું. साथियों, जब कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ पर्यटन को होता है, हमारे युवा नौजवानों को रोजगार में होता है. અને આપણું તો સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા આ બે આસ્થા, જનજાતીય પરંપરા, પ્રાકૃતિક વાતાવરણ એનાથી બધા ભરેલા છે. અને મારું તો સૌભાગ્ય રહ્યું કે શામળાજી મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો અવસર મને મળ્યો હતો. આજે કોઈ પણ જાય, 15 વર્ષના છોકરાને ખબર નહીં હોય પહેલા શામળાજીના શું હાલ હતા. અને આ ક્ષેત્રમાં જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એના કારણે યાત્રીઓની સંખ્યા વધી રહી છે, એના કારણે રોજી રોટીના અવસર વધી રહ્યા છે. भाइयों और बहनों, मैं साबरकांठा ऐसे समय आया हूं जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इसी वर्ष आजादी की जंग के दौरान पाल गढ़वाल आदिवासी नरसंहार, पाल चितरियानो आ घटना એને પણ 100 વર્ષ થઈ રહ્યા છે. आदिवासी नायक मोतीलाल तेजावत जी एमना नेतृत्व में आदिवासीओए अंग्रेजोनी विरुद्धમાં જંગ માંડ્યો અને એમણે અંગ્રેજોના પાયા હલાવી દીધા હતા. આ મારું સાબરકાંઠા. આ રઘવાયા થયેલા અંગ્રેજોએ આ પાલ ગઢવાલ આદિવાસીઓનો નરસંહાર કર્યો, મોતને ઘાટ ઉતાર્યા. પરંતુ દુર્ભાગ્ય, આઝાદી પછી આ ઘટના ભૂલાવી દેવામાં આવી. આ મારું સૌભાગ્ય હતું કે જનજાતીય સમુદાયનો ત્યાગ અને બલિદાન એ આવનારી પેઢીઓને ખબર પડવી જોઈએ. અને એટલા માટે આપણે પાલ ચિતરિયાની અંદર શહીદોના એ સ્મારકને એને ફરી એકવાર દુનિયાની સામે લાવવામાં આપણે સફળ થયા. અને આજે શહીદ સ્મૃતિવાન उन अमर बलिदानियों से प्रेरणा है, नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति का रास्ता दिखा रहा है. मेरा यो भी सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के लिए आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी अवसर मिला है. हमारी सरकार ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा एमना जन्म दिवस ने जनजातीय गौरव दिवस तरीके आखो देश मनावे ये हमें निर्णय कर्यो छे. हमारी सरकार देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम इन सेनानियों की याद में विशेष संग्रहालय भी बनवा रही है. साथियों, आजादी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर एक और बड़ा संयोग हुआ है. पहली बार जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है. देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है. 130 करोड़ से अधिक
भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। जिस समावेशी लोकतंत्र का सपना आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो आज साकार हो रहा है। साथियों, आज मैं साबरकांठा इस पवित्र धरती से गुजरात के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, देशवासियों से भी आग्रह करता हूं, और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में 13 अगस्त से ही देश का हर घर अपने यहां तिरंगा फहराएगा। साबरकांठा अरवली के साथ साथ पूरे गुजरात और पूरे देश में ये तिरंगा फहराकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का अमृत संकल्प ले रहा है। जिन लोगों ने देश की आजादी के बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जो आपके घर पर तिरंगा लहराता देख करके उनकी आत्मा आपके परिवार को भी आशीर्वाद देने वाली है। एक बार फिर अनाजे साबरकांठा जे मान सम्मान અને વિરાટ જનસાગર, આટલી મોટી સંખ્યામાં મારી માતાઓ બહેનો, આપના આશીર્વાદ એ જ મારી શક્તિ છે, એ જ મારી ઉર્જા છે, એ જ મારી પ્રેરણા છે। આપના આશીર્વાદથી આ પુરુષાર્થના માર્ગે વધીને જન જનનું કલ્યાણ થાય। જે સંસ્કાર ગુજરાતે આપ્યા છે, ये हिंदुस्तानना गामड़े गामड़े पहोंचाडवा, અને એમાં આપણા આશીર્વાદ મોટી મૂડી છે। હું આપનો હૃદયથી આભાર માનું છું અને સાબર ડેરીની આખી ટીમને સતત વિસ્તાર અને વિકાસના અભિયાનને અનેક અનેક શુભકામનાઓ આપું છું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બે હાથ ઉપર કરીને જોરથી મારી સાથે બોલીએ, ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, આપના આ ઉર્જાવાન વક્તવ્ય માટે, પ્રેરક માર્ગદર્શન માટે। આજે અહીં પધારી વિકાસ પ્રકલ્પોને લોકાર્પિત કરવા માટે, સાબર ડેરીની પ્રગતિને નવી ગતિ આપવા માટે અને અહીંના લાખો સભાસદો સાથે સંવાદ કરી સૌનો પથ પ્રદર્શિત કરવા માટે અંતઃકરણપૂર્વક આપનો આભાર માનીએ છીએ। આપના ઉર્જાવાન નેતૃત્વમાં પ્રત્યેક ભારતીયના જીવનમાં વિકાસના અજવાળા પથરાયા છે અને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ દરમિયાન સમગ્ર જનજનનો વિકાસ વધુ અજવાળા સાથે વધુ ઉન્નતિને આબશે તેવો જનજનને વિશ્વાસ છે। પુનઃ અત્રે પધારવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને પુનઃ પધારો તેવી લાગણી સાથે આપનો ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ। સાથે જ અમે આભાર માનીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, માનનીય પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી, માનનીય મંત્રી શ્રી સહિત સહકારી ક્ષેત્રના સૌ આગેવાનોનો, અત્રે ઉપસ્થિત સૌ આમંત્રિત મહેમાનોનો અને ખાસ કરીને જેમના કારણે આ ભવ્ય કાર્યક્રમ કરવા। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण साबरकांठा से, गुजरात से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबर डेयरी से जुड़ी हुई 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और that Finance and Education Minister. He is concurrently the chairman of the Monetary Authority of Singapore, the nation's central bank and financial regulator. Mr. Shanmugaratnam has spent his entire working life in public service in roles principally related to economic and social policies. Again, Mr. Shanmugaratnam co-chaired
the G20 high-level independent panel on financing future security from pandemics in the year 2021. He currently co-chairs the Global Commission on the Economics of Water, which is aimed at re-envisioning and proposing solutions to overcome a growing crisis of access to clean water. He is also a member of the United Nations High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism. He also has led the G20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance. Mr. Shanmugaratnam chairs the group of 30, an independent global council of economic and financial leaders. He also chairs the Global Education Forum and the advisory board for the UN's Human Development Report. He earlier chaired the International Monetary Fund and Financial Committee, IMFC, for 4 years. He was the first Asian chair. I'm indeed grateful and happy that the first lecture is being delivered by Sri Tharman Shanmugaratnam. Thank you. His Excellency, Prime Minister Narendra Modi, Her Excellency Finance Minister Nirmala Sitharaman, Mrs. Sangeeta Jaitley, and family members, Excellencies and distinguished guests, many of whom are friends and close associates of Mr. Arun Jaitley. It is a real honor and privilege for me to be speaking at this inaugural lecture named after one of India's most outstanding public leaders. I knew Arun when I was the Deputy Prime Minister and Finance Minister. We had many exchanges, and he left a deep impression on me, an impression of his character. He was, on the one hand, a person of unusual humility and generosity, but he was also a person who clearly had self-belief. He had that unusual combination of humility and self-belief. And that was part of the reason why Arun Jaitley was a man for all seasons and all parties. It is how he marshaled through some of the most complex reforms, the GST being the most important, of course, bringing all stakeholders together, making compromises, building bridges, finding consensus. And that legacy of Arun Jaitley will surely live on in India and for many of us around the world. And it is a legacy that will offer many lessons for how we address future challenges. We have entered an era of profound fragility globally. We in fact have a confluence of fragilities, a confluence of insecurities, geopolitical, existential, economic, and social at the same time. We know the geopolitical. We know that the risk of escalating geopolitical tensions and conflicts is greater than it has been at any time since the end of the Cold War. The global system of rules and norms aimed at preserving peace and territorial integrity was never perfect. It was always imperfect. But what's happening in Ukraine is a major rupture and will have ramifications that go beyond just another conflict or another war. And the ramifications could be catastrophic.
Second, we have a prospect of stagflation, higher inflation, and slow growth for a period of time, not just for a year or a year and a half. And in the advanced countries, there's a very real prospect of a recession in the near term. The risks of high inflation preceded Ukraine, but are of course now accentuated. And critically, although the levels of inflation and having slow growth or recession for a while doesn't constitute the most important problem in the world, critically, it will erode political capital at the time when we need political capital within nations and globally to address much larger challenges, including the challenges of climate change, a water crisis, and shrinking biodiversity. So that's the second challenge, stagflation. The third challenge, as I've just mentioned, is that the global commons are deteriorating, and they're deteriorating at an accelerating pace. The shifts in the environment, which are structural, not just episodic, not just random fires and extreme heat waves or droughts. These structural shifts in the environment have combined with the increased risk of global scale spread of infectious diseases, epidemics and pandemics. And we now have to live with that threat as part of the world that we are in. And it'll be a threat to lives and livelihoods for many years to come. In the short term, the unpalatable reality is that we will have to rely more on fossil fuels to ensure energy security and to prevent sharply higher energy prices. But it means that it's all the more important that we double down on our medium to long-term strategies of making a transition to a low-carbon energy future and making a transition to new ways of behavior and the circular economy that Prime Minister Modi has emphasized and spoken about. All the more important that we double down on these medium to long-term shifts in behavior, shifts in policies, mobilization of investments to achieve a sustainable future. And the fourth challenge, coming out of the geopolitical tensions, higher food prices, energy prices, fertilizer prices, coming out of all the larger global challenges we face, is that the developing world, a significant part of the developing world, now faces the risk of a rollback in the economic and social gains that were very painfully achieved in recent decades. Development is going to be more difficult. And the experience of the last 2 years because of COVID has set us back much further in the developing world. 1.5 years of lost learning, in some cases more. It's not just a short-term loss, it's a loss for the long term, for all the young children who are affected. And we risk a permanent scarring of the young, further disempowerment of girls, because many of the girls are not going back to school, and we risk something more than that. We risk civil wars and conflicts between neighboring states. So we have a confluence of challenges that is unprecedented in its combination, and it's not here for the short term. This is not a perfect storm. It's not a perfect storm in the traditional sense of a conjuncture of one-off events or random shocks. We have entered a perfect long storm, structural insecurities that are going to be with us for some time to come. Geopolitical, existential, economic, social. And we cannot wish these insecurities away. Nor can we pretend that today's state of multilateralism is going to enable us to address these insecurities. We do need
a new and stronger multilateralism, more effective in meeting both the nation's own interests and our collective interests. Overriding priority must be to avoid a polarized world. That the world is becoming more multipolar is irreversible. And that's a mark of success of the global economy. There are many more poles of success and influence. That's irreversible. But we must prevent a multipolar world from becoming a polarized world. That has to be our overriding objective. It requires a new strategic understanding amongst the major nations, an understanding that has to be shaped by what they share in common, what their common interests are, which is to provide security from climate change and pandemics, to provide peace, and to avoid global financial crises. These are challenges that every nation faces. Every nation has an interest in avoiding this, avoiding climate change, going beyond the bounds of what will be safe, avoiding pandemics, preserving peace, and avoiding major financial crises. And we have to shape strategic understanding between the major nations around those common interests and define multilateralism on that basis. The rules of the game will have to be updated to make sure that trade is fair, that there's no harmful competition. Supply chains are being diversified, not just because of COVID. It was happening before COVID, and COVID has accelerated it. But let's not retreat from an open, integrated global order, which has been hugely beneficial to all nations, including the largest nations. It will not assure us of peace. Economic interdependence does not assure us of peace, but it makes peace much more likely than a world of increasingly decoupled markets, data, payments, technologies. We must stay open and stay integrated. Achieving this will require geopolitical skill and leadership. And India will be taking over the G20 presidency next year at this very important time, when leadership is required and new directions are required, including new directions in the existing multilateral institutions, like the World Bank, like our multilateral development banks, which have to be refashioned for a world that is fundamentally different from the time when they were originally established. A world where the challenges of the global commons are central to every nation's future, including especially developing nations, in addition to poverty alleviation. India itself is looking to its next 25 years, having reached 75 years of independence. It has emerged with strength from COVID, and it is now looking to create, as Prime Minister Modi says, the new India. And India's challenges in the next 25 years are enormous, despite all the global challenges we face. In fact, India has greater opportunity than any other major nation in the next 25 years. But realizing the opportunity will require higher ambition in growth, higher ambition in social inclusivity, and high ambition in developing a sustainable society and economy. It also requires greater urgency. India will have to accelerate the pace of reforms that has been started and reorient the role of government. But India is able to build on the very distinctive achievements of recent years. I would say dramatic achievements of recent years. Two in particular. First, almost unique internationally, the large-scale implementation
of the large-scale provision of basic social amenities to hundreds of millions of people within a short space of time. Hundreds of millions of people, basic social amenities, toilets, electrification of all villages. 98% of India is now having access to electricity. Perhaps not the entire day, but it's got access to electricity which didn't exist before. Clean cooking gas, when in fact, hundreds of millions of people depended on pollutive forms of ways of cooking in the past, with great impact on their health, particularly the women. Primary healthcare centers, 150,000 primary healthcare centers being set up all around the country to provide close access wherever people live, all as part of Ayushman Bharat, public health assurance. Most recently, functioning water taps and water pipes all across the country. Work in progress, but a very important task. And all of these, if you think about them, toilets, electrification, clean cooking gas, functioning water taps, particularly empower women. It's the women who've been spending hours every day queuing up for water. They particularly empower women. And I know Prime Minister Modi started this in Gujarat some years ago, but this is an immense historical task, correcting a legacy of neglect for the poor, for ordinary people in the rural areas, and for girls and women. Immense historical task. So that's the first unusual achievement of recent years that India builds on as it looks to the future. The second, equally dramatic, is what has been achieved to provide for digital and financial inclusion. Again, on an immense scale, in a country with 29 different states, with different democratically elected governments, and vastly differing stages of development. Immense achievement. And I don't need to elaborate about it, but the India stack, starting with Aadhaar and UPI, Unified Payments Interface, so that everyone can make digital payments, is a remarkable achievement on a global scale. There's been no financial innovation of that scale and speed achieved in any other country. We now need the same boldness of political and social vision, the same attention to implementation, the same ability to cut through red tape, the same ability to mobilize the ground, and to have center and states work closely together to address the very important challenges of the next 25 years. First, creating vastly more jobs, including jobs for the low-skilled and semi-skilled. Second, creating a more sustainable economy and society, and demonstrating to the world how this can be achieved whilst continuing to develop. And thirdly, underpinning everything else, investing in social mobility, investing in quality in education and basic healthcare, so as to create opportunities for all. In other words, India needs not just an India stack, but a social development stack, going beyond the provision of basic social amenities, the toilets, electricity, clean cooking gas, and so on. Very important, but going beyond that to now develop opportunity for people to, on a self-determining basis, achieve better lives through education, better healthcare. And it can be achieved because the same almost missionary zeal for implementing reforms on the ground, the same ability to work with all stakeholders can be applied to this very large task of upgrading the majority of young Indian persons' futures, starting from young and skilling them through life. It needs urgency. As Prime Minister Modi said,
on India's 75th anniversary. This is India's Amrit Kal, its critical moment. As he put it, we have to start now. We don't have a moment to lose. And the next decade will be critical, not just the next 25 years. The next decade will be critical because there is a race against demography. There's a very large group of young people, as large as China faced at an earlier phase of history. 580 million Indians are below the age of 50, below the age of 25. That's a large number of people who need to be quickly skilled, given confidence to earn their own success in the workforce. For those of us who are from outside India, those who are economists, academics, observers, well-meaning observers, we must recognize the complexity of these challenges. And part of the complexity comes from the fact that India is now unraveling what are very deep legacies that go back to the earliest pre-independence years, and in some instances, go back to the colonial era. A legacy of economic thinking and strategies that from the earliest years of independence relied on state control of the economy and complex and frequently changing regulation. Very strong legacy, which has not disappeared from India. A legacy of preference for capital-intensive industry rather than labor-intensive industry, and inadequate attention-paced job creation. A legacy going back to the pre-independence years of letting people live with very low incomes in the rural areas for all their lives, rather than finding ways to reform and allow people to be freed up to move into more productive activity. And a legacy of neglect, again going back to the pre-independence years, neglect of basic education and healthcare for a large part of the population. Of course, a legacy of unequal treatment of girls and women as well. Each of these is now being unraveled. It takes time. It's not just one or two policies. It will take missionary zeal, but there's urgency now in moving faster. India needs this urgency. It requires much higher growth and much deeper inclusivity, and the two go together. You cannot sustain high growth for 25 years, let alone 40 years, without much deeper inclusivity, and you cannot achieve inclusivity without higher growth. As Arun Jaitley put it in 2017, he asked the question, how do you fight poverty? And as he put it, you need a high level of growth. Growth brings in resources, and the policies of the state have to be aimed at achieving a high level of growth. It's absolutely necessary to tackle poverty and achieve inclusivity. But he also asked, will growth itself address or remove poverty? No, growth itself doesn't. You also need social activism, putting the poor at the forefront of thinking, of public consciousness, of policy, putting the poor at the forefront. And again, I know that Prime Minister Modi has been talking about this very recently. I will talk briefly about growth and jobs, and then I will talk about inclusivity. And I will not cover the ground comprehensively in the interest of time, but let me first say that India is not going to be able to achieve its economic or social ambitions in the next 25 years without substantially higher growth ambition. India must grow by at least 8 to 10% over the next 25 years, 8 to 10% a year. It is the only way in which it is going to be able to both lift average incomes and per capita income
as well as create many more jobs. To do both at the same time, to lift per capita income significantly, and to create many more jobs for a large young population, you need higher growth. And 8 to 10% is the minimum that has to be achieved in the next 25 years. We've seen in many developed economies, and even in China in the last 10 years, a situation where productivity is achieved at the expense of jobs. In fact, the employment rate in many developed countries has come down in the last 10 years. It has also come down in China. China has sustained high productivity growth, but the employment rate has come down. India does not have that luxury of choosing between productivity growth or job growth. You need the productivity growth because it's the only way in which incomes are going to grow, but you need a lot more job growth. And it can be achieved because that's what several East Asian economies did. In fact, for 40 years, growth of above 8% for 40 years, allowing for both productivity growth to be healthy and strong, and very significant job growth keeping pace with the growth in the working age population. It can be achieved in India. One of the reasons why it can be achieved is that there's wide disparity within India itself. There's tremendous divergence within India between the states that are doing well and the states that are lagging. And there must be ways of closing that divergence, achieving convergence within India. That itself will boost growth. Second, this huge opportunity to free up a large part of the population that is still stuck in low productivity activity in the rural sector. It's not as if people want to be stuck with low incomes. It requires major policy shift, major reform, and innovation in agriculture, and it can be achieved. Those are two very important reasons why we can aim for higher growth in India. And the soon to be implemented simplification of labor laws will also help greatly, because the labor laws effectively have been anti-job. They have kept a large part of the population in the informal sector and in very small firms, and India has been unable to achieve the scale economies required for both productivity growth and job growth to be higher. You can only achieve these ambitions with a strong focus on export-oriented manufacturing, a much stronger focus than there is today. And with a strong focus not just on jobs for the highly skilled, like those in the IT sector, but a strong focus on those who come in with low skills or come in with a moderate amount of skills. Because manufacturing has a way of taking in unskilled people and making them semi-skilled. And it's got a way of taking in semi-skilled people and making them more highly skilled over time. It has a ladder of skills. India has to use the opportunities in global markets to create many more jobs for the unskilled and the semi-skilled. And those opportunities are still plentiful. Don't believe those who say globalization is in retreat. It may no longer be expanding the way it used to be. You may not be getting that hyper pace of expansion, but the level of exports and imports today in goods of many forms is higher, much higher than it was 20 years ago. It may be stabilizing, but it's a huge market of opportunity for India. And it means being willing to specialize in what India is good at, going for an openness in trade and investment by local firms, investment by foreign direct investors. Openness really counts, because then you get the cheapest and best inputs, and you can be a competitive supplier to the world. It's what Germany does, for instance. A large manufacturing economy. They specialize. They specialize in components in which they have a dominating presence globally. They rely on inputs from the rest of the world, and they specialize in components which the rest of the world needs. It doesn't mean producing a whole product. It means specializing in critical components and having that pricing ability. India's success
already seen now in electronics, in vaccine manufacturing, shows the way forward. The PLI scheme, the Production Linked Incentive Scheme, is working well, and it has to be expanded with a special focus on labor-intensive industries. This can work for India. India can achieve. It can achieve and can become a leading export manufacturing nation. Agriculture is critical. We have to create better jobs in agriculture. And we know what the reforms required are. And it will require more R&D in higher yield crops, weather-resistant crops, and so on. But it's also very important in addressing the water crisis, because agriculture in India is taking a very large toll on water. 90% of all fresh water used in India is in agriculture. Globally, it's about 70% or close to 70%. 90% of all fresh water used is in agriculture. We need a far more efficient system of water use, precision irrigation, innovations that can improve soil quality. These are innovations that exist and need to be scaled up across the Indian agricultural sector. And it will raise incomes and free up people to move into urban areas for other types of jobs, including higher productivity jobs. And I want to also say that whilst the digital economy offers significant prospects for India in the next decade, 2 decades, perhaps 3 or 4 decades, because the world needs more software, and India's got an abundance of scientists and engineers and software developers who are good at this, that will still be a very small fraction of the workforce. It's a very small fraction of the workforce. We have to think of other services that can generate jobs. And tourism in India and the craft economy offer significant potential as well. India is still not tapping its full potential for tourism. It's a remarkable country to visit for people from anywhere in the world. I mean, natural attractions like Kaziranga in Assam, or Kutch in Gujarat, or Kumarakom in Kerala, diverse natural attractions, historic sites like Kushinagar in UP, Kumbakonam in Tamil Nadu, many sites, many experiences. I've just given you 5 or 6 examples, and I was only using those starting with the letter K. So you can imagine if I was to take the whole alphabet. It's a land of diversity, richness, and depth of historical heritage. Still not fully tapped. But likewise, the craft economy. There's a multitude of villages around India where you have craftspersons, men and women, weaving, doing pottery, doing craft of various forms. Some of them are farmers who spend part of their time doing this. It's a huge opportunity for developing non-farm incomes in India. That combination of tourism and developing the craft economy, unique, differentiated products all over India. And I just wanted to highlight that opportunity. Finally, let me move to inclusivity, which underpins everything else. We must address the challenge of child stunting soon. It's still a major challenge. Almost 40% of Indian children are stunted. We know the causes: malnutrition, poor diets when young. Again, there's reason for optimism because the recent programs that have been introduced are working well. Poshan Abhiyan, started in some states, has been working well, significant improvements in maternal health. And the recently launched Nutrition Smart Village initiative, which has to be scaled up across the country, offers promise, harnessing traditional recipes to give people better diets. But you know, it's such an important investment. There's no public investment with higher long-term return than eradicating childhood stunting. Next, education. The new economic policy has been launched. It's extremely important, and basically
if I had to summarize what has to be done, there have been improvements in school enrollment, girls and boys, but quality is a big issue. Learning outcomes are a big issue. We know this, the evidence. Pradham is a major NGO that does very careful assessment of learning outcomes at different levels. Essentially, at Standard 5, almost 50% of the kids are unable to achieve Standard 2 levels of literacy and numeracy. And once you've been set back at that level, it's not easy to catch up. So we have to improve quality in our schools as a major objective. And again, here there's reason for optimism because Niti Aayog has been doing these educational quality index studies. And they find again that some places are improving much faster than others, including in the large states. Even amongst large states, some have been moving much faster than others in recent years. And the source of improvement is improved governance of education, how teachers are selected, how school leaders are appointed. It's governance. A public school system can achieve quality. I say this coming from Singapore because we have a very highly regarded education system. It's a public school system. None of the countries in the upper band of the annual PISA rankings or once in 2 year PISA rankings, none of them have decentralized school systems. They all have public school systems or school systems that are coordinated by the public sector. And as India's enrollments have gone up, with a large increase in enrollments in the public schools, it is critical that we bring quality into the public school system. And finally, higher education needs reform. The Prime Minister just spoke about this recently again. Like many other countries in the world, and like China, in fact, India's higher education system has been overly academically oriented. And it just hasn't prepared the vast majority of graduates for the working world. The large corporations take some of them in and then they put them through an additional year of training just to make them ready for work. But higher education has to have a stronger applied and skills orientation. And we need to follow that up through the years once people are in their career. Skills centers and skills-oriented universities are critical. I just came from one in Assam because at the suggestion of the Prime Minister, Singapore has been collaborating with the Assam state government to set up a skill center. These are all doable directions. We can achieve it. Reform education, improve governance, focus on skills. Let me conclude by saying something of a broader nature. I was listening recently to an outstanding musical performance by 3 of India's most accomplished classical musicians, Zakir Hussain, Kala Ramnath, Jayanti Kumaresh, tabla, violin, veena. Traditions of both the North and South. The 3 of them came together. And they've been performing across the United States to full crowds. In fact, they're going to be performing in Singapore in a few weeks' time, and I will be there together with my wife. Now, they decided to call themselves, for the purpose of these performances, Triveni. Triveni named after Triveni Sangam, the mythical confluence of rivers, Ganga, Yamuna, and Saraswati. So they call themselves Triveni. And I was just listening to them, and I realized this was an unusual confluence because it was not just about their individual genius, and they are musical geniuses, each of them. Each of them are geniuses. But it was not just the individual genius. As you listen to a performance of that nature, it's all about improvisation, as you know. Each of them listening to the other, teasing them a little bit, prompting them, taking over, co-creating and co-empowering. That's what it's about. It's a collective genius. India has no lack of individual top talents. It may be overrepresented internationally.
But what it has to develop is that collective capability, co-empowerment, co-creation, and having a high degree of trust amongst each other. And that has to be the challenge, co-empowerment and co-creation between the government and the private sector, together with NGOs, cooperatives, and people themselves, co-creation and co-empowerment between the center and the states and the panchayats, both at the district and the village level, and co-empowerment amongst people themselves, across caste, across class, across faiths, across white and blue collar, across gender, girls and boys, mothers and fathers. Develop this collective capability for the next 25 years. That is India's promise. And if India succeeds, as I believe it will be not just uplifting 1/5 of the world's population, it will also be showing the way for many others. Thank you very much. I thank Honorable Senior Minister from Singapore, Sri Tharman Shanmugaratnam, for this comprehensive inaugural lecture on India's journey towards growth with inclusivity and inclusivity with growth. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज का ये आयोजन मेरे और एक घनिष्ठ मित्र अरुण जेटली जी को समर्पित है। बीतों दिनों को याद करते हैं तो उनकी बहुत सारी बातें, उनसे जुड़े बहुत से वाक्य स्वाभाविक रूप से याद आते हैं। और यहां बहुत सारे उनके पुराने साथी मैं देख रहा हूं। उनकी ऑरेटरी हम सब उसके कायल थे और उनके वन लाइनर लंबे अरसे तक हवा में गूंजते रहते थे। उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा था और उनका स्वभाव सर्वमित्र वाला था।
यहाँ जितने भी लोग दिखते हैं हर एक की अलग अलग दुनिया है, लेकिन सब अरुण के मित्र थे। ये अरुण के सर्वमित्र की विशेषता थी और उनके व्यक्तित्व की इस खूबी को सभी आज भी याद करते हैं और हर कोई अरुण की कमी महसूस करता है। मैं अरुण जेटली जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, अरुण जी की स्मृति में इस लेक्चर का जो विषय रखा गया है, ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ, वो सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसी का मूल मंत्र है। मैं थर्मन जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और मैंने कई बार उनको सुना भी है, उनको मैं पढ़ता भी रहता हूं। उनकी बातों में, उनके अध्ययन में, वो सिर्फ भारत में ही बोलते हैं तब नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी जब जाते हैं तो काफी रिसर्च करते हैं। लोकल टच उनकी हर एकेडमिक थिंकिंग में, उनकी फिलॉसफी में बहुत सटीक तरीके से वो उसको नीट करते हैं। आज भी हम सब ने अनुभव किया, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने वैश्विक परिस्थिति से लेकर के हमारे देश के बच्चों तक हमें ले आए। मैं उनका बहुत आभारी हूं, उन्होंने समय निकाला। साथियों, जिस विषय पे यहां चर्चा हो रही है, जिस विषय को लेकर के आज अरुण जेटली व्याख्यान माला का हमारा प्रारंभ हुआ है, अगर मैं इसी को सरल भाषा में कहूं तो एक प्रकार से ये थीम, मेरी सीधी सादी भाषा में मैं कहूंगा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसके साथ ही इस लेक्चर की थीम आज के पॉलिसी मेकर्स के सामने आ रही चुनौतियां और दुविधाओं को भी कैप्चर करती है। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या बिना इंक्लूजन के सही ग्रोथ संभव है? आप अपने आप को पूछिए, क्या बिना ग्रोथ के इंक्लूजन के बारे में सोचा भी जा सकता है क्या? हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर मुझे 20 साल से भी अधिक समय से काम करने का अवसर मिला है और मेरे अनुभवों का सार यही है कि बिना इंक्लूजन के रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सकता। और इसलिए हमने ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी का रास्ता अपनाया, सबके समावेश का प्रयास किया। बीते 8 वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस स्पीड के साथ काम किया है, जिस स्केल पर काम किया है, वैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। बीते 8 साल में भारत ने 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। 9 करोड़। ये संख्या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इसकी सारी आबादी को भी जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा होती है। यानी आप स्केल देखिए, बीते 8 साल में भारत ने 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाकर गरीबों को दिए हैं। थर्मन जी ने इसका बड़ा पैशन होकर के उल्लेख किया। यह संख्या साउथ कोरिया की कुल आबादी के 2 गुने से भी ज्यादा है। बीते 8 साल में भारत ने 45 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले हैं। ये संख्या भी जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, मैक्सिको, इनकी टोटल पॉपुलेशन से भी करीब करीब उसके बराबर है।
बीते 8 साल में भारत ने गरीबों को 3 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। और मुझे याद है एक बार आप ही के मंत्रिपरिषद के साथ ही ईश्वरन से मेरी बात हो रही थी, सिंगापुर के मिनिस्टर। जब मैं उनको ये स्केल बताता था हाउसिंग का, तो ईश्वरन ने मुझे कहा तो आपको तो हर महीने एक नया सिंगापुर बनाना पड़ेगा। मैं आपको ग्रोथ थ्रू इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी थ्रू ग्रोथ का एक और उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में कुछ साल पहले हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, जिसका उल्लेख थर्मन जी ने किया, और आने वाले प्रमुख सेक्टर में उन्होंने हेल्थ सेक्टर की चर्चा भी की है। इस योजना की वजह से 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में और हिंदुस्तान में कहीं भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। बीते 4 साल में आयुष्मान भारत की वजह से देश के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। हमने इस योजना में इंक्लूजन पर फोकस किया। गरीब से गरीब जो है, आखिर की पंक्ति में बैठा हुआ है, उसको भी आरोग्य के संबंध में आवश्यक अच्छी सुविधा मिले। और समय के साथ हमने देखा है, वो पहलू तो इंक्लूजन का है, लेकिन समय ने ये बताया है कि इससे ग्रोथ का रास्ता भी बनता चला गया। जो पहले एक्सक्लूडेड थे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े, तो डिमांड भी बढ़ी और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी का भी विस्तार हुआ। जब भारत की 1/3 आबादी जो पहले बेहतर हेल्थ केयर की सुविधाओं से दूर थी, उन्हें इलाज की सुविधा मिली, तो इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि हेल्थ केयर कैपेसिटी को उसी हिसाब से खुद को मजबूत करना पड़ा। मैं आपको बताता हूं कि आयुष्मान भारत योजना ने कैसे पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 2014 से पहले हमारे देश का औसत था, एवरेज 10 साल में करीब 50 मेडिकल कॉलेज बना करते थे। 10 साल में 50 मेडिकल कॉलेज, इतने बड़े देश में। जबकि भारत में पिछले 7-8 साल में पहले के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा, यानी करीब करीब 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कहां 50 और कहां 209। और आने वाले अभी 10 साल का जब हिसाब लगाऊंगा तो ये मामला और आगे बढ़ने वाला है, वो 400 तक पहुंचने वाला है। बीते 7-8 साल में भारत में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 75% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब एनुअल टोटल मेडिकल सीट्स की संख्या बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुकी है। यानी अब देश को कहीं ज्यादा डॉक्टर मिल रहे हैं, देश में तेजी से आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। इंक्लूसिवनेस के लिए लाई गई एक योजना का जमीन पर ग्रोथ की दृष्टि से भी इतना बड़ा प्रभाव हम बिल्कुल देख सकते हैं, हम उसको आंक सकते हैं। और मैं तो आपको ऐसी दर्जनों योजना गिना सकता हूं। भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने, जिसका उल्लेख भी थर्मन जी ने किया, लगभग 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स ने गांव में रहने वाले गरीब तक भी इंटरनेट की ताकत को पहुंचाया है। भारत के भीम यूपीआई ने करोड़ों गरीबों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा से जोड़ा है। भारत की स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी वाले साथियों को
बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का अवसर दिया है। जो हमारे यहाँ नगर पालिका में, महानगर पालिका में है, जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जिनके साथ हमारा रोज का नाता होता है, बैंक मैनेजर होगा, उसके घर में रोज रेहड़ी पटरी वाला माल देता होगा, लेकिन उसको बैंक में जगह नहीं होगी। यह हाल था। आज हमने इसको जोड़ दिया है। उसी प्रकार से भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया उस पर काफी कुछ इन दिनों जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो लिख भी रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां उसका रेटिंग भी कर रहे हैं। भारत का एक इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देश के 100 से ज्यादा जिलों में रहने वाले करोड़ों साथियों को अपलिफ्ट कर रहा है। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना ये है कि हिंदुस्तान के और जिलों की तुलना में जो पीछे रह गए हैं, उनकी आकांक्षाओं को हम एड्रेस करें, उनको उस राज्य की टॉप पोजीशन की बराबरी तक ले आए और फिर धीरे धीरे उसको नेशनल टॉप की बराबरी तक ले आए। साथियों, इसका इतना बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है और एक प्रकार से इन 100 डिस्ट्रिक्ट का इंक्लूजन हो रहा है डेवलपमेंट की दुनिया में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और शिक्षा पर भी थर्मन जी ने काफी बल दिया अपनी बातचीत में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में, मदर टंग में पढ़ाई पर जोर दे रही है। जो अंग्रेजी नहीं जानता, जो एक्सक्लूडेड है, उसे अब मातृभाषा में पढ़कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारत की उड़ान योजना, इसने देश के, हमने कई हवाई पट्टियों को जीवंत कर दिया, नए एयरपोर्ट बनाए, दूर दूर टियर 2, टियर 3 सिटी में भी हम चले गए और उड़ान योजना लाए। एक फिक्स अमाउंट में हवाई जहाज में सफर की एक रचना की। भारत की उड़ान योजना ने देश के अलग अलग कोनों को हवाई मार्ग से जोड़ा है। गरीब को भी हवाई जहाज में उड़ने का हौसला दिया है और मैं कहता था हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज में बैठेगा। यानी इंक्लूजन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। उसी का परिणाम है आज भारत के में एविएशन सेक्टर का ग्रोथ इतना हो रहा है, 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर बुक हुए हैं भारत के लिए। इस देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट खरीदा, क्योंकि पैसेंजर वाला इंक्लूजन का जो हमारा अप्रोच रहा, उसी का परिणाम है। अभी थर्मन जी ने जिसकी बात की, जो मैं गुजरात में जिसको मैंने बहुत मुखरता से काम किया था, जल जीवन मिशन, देश के हर घर को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल। और उस सिर्फ वो पानी मिलता है नहीं, वो उसका समय बचाता है, कठिनाइयां बचाता है, हेल्दी कंडीशन के लिए वाटर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उन सारे दृष्टि से ये मिशन बहुत बड़ा सामाजिक जीवन, और जिन्होंने बच्चों के न्यूट्रिशन का विषय किया, उसका संबंध पानी से भी है। शुद्ध पानी, पीने का शुद्ध पानी, ये भी न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और हमारा नल से जल अभियान उस इश्यू को भी एड्रेस करने वाला का एक बड़ा महाअभियान का हिस्सा है। सिर्फ 3 साल में ही इस मिशन ने 6 करोड़ से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा है। भारत में मोटे तौर पर लगाया हिसाब तो 25-27 करोड़ घर है, उसमें से 6 करोड़ घरों को पानी पहुंचा दिया है जी। ये इंक्लूसिवनेस आज देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान कर रही है, उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। और किसी भी देश के विकास में इसका कितना महत्व है, ये आप अर्थ जगत के लोग जो यहां बैठे हैं वो भली भांति इस बात को जानते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आप भी जानते हैं, और ये तो मैंने देखा है कि यूएन में भी इसकी चर्चा होती है, एसडीजी में भी उसकी डेवलपमेंट गोल के अंदर इन मुद्दों पर चर्चा होती है। और वो कह रहा है दुनिया में दशकों से
अनेक देशों में प्रॉपर्टी राइट्स ये बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। और जब प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तब समाज के जो आखिरी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता है, सबसे ज्यादा मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत ने इस दिशा में जिस तेजी से काम किया है वो अभूतपूर्व है। और मैं मानता हूं दुनिया के एकेडमिशियंस, दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस विषय को अध्ययन करेंगे और दुनिया के सामने इस विषय को प्रस्तुत करेंगे कि स्वामित्व योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्र में घरों और इमारतों की मैपिंग का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी तक भारत के 1.5 लाख गांवों में ये काम हम ड्रोन की मदद से करते हैं। ड्रोन से सर्वे होता है और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग होता है और पूरा गांव वहां मौजूद रहता है जब ये सारी प्रोसेस होती है तब। और 1.5 लाख से अधिक कामों में ड्रोन से ये सर्वे पूरा किया जा चुका है। और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप कल्पना करिए, ड्रोन के माध्यम से 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की मैपिंग का काम हो चुका है, तब उन घरों से जुड़ी हुई जमीन वाला। और 80 लाख से ज्यादा लोगों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। और ये भी जो मालिक है उसकी सहमति से होता है, उसके साथ विचार विमर्श होता है, उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ विचार विमर्श होता है। एक लंबी प्रक्रिया है। और इसका मतलब यह हुआ कि इससे गांव के लोगों को बैंक लोन मिलना आसान हुआ है, उनकी जमीन अब कानूनी विवादों से भी बच रही है। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स बाय कंपल्सन के बजाय रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन से आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। देश आजादी के 100 साल मनाएंगे तब देश कहां होगा, इस लक्ष्य को लेकर के हम आज रोड मैप बना करके आगे बढ़ रहे हैं। दशकों पहले देश ने ये देखा था कि जब कोई रिफॉर्म मजबूरी में होता है तो उसके इंस्टीट्यूशनलाइज होने की उम्मीद कम रहती है। जैसे ही मजबूरी खत्म होती है वैसे ही रिफॉर्म भी बुला दिया जाता है। रिफॉर्म जितने जरूरी होते हैं उतना ही जरूरी वो एनवायरनमेंट होता है, मोटिवेशन होता है। पहले भारत में बड़े रिफॉर्म तभी हुए जब पहले की सरकारों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हम रिफॉर्म्स को नेसेसरी इविल के रूप में नहीं बल्कि एक विन विन चॉइस के रूप में मानते हैं, जिसमें राष्ट्रहित भी है, जनहित भी है। इसलिए बीते 8 सालों में हमने जो भी रिफॉर्म्स किए उन्होंने नए रिफॉर्म्स के लिए रास्ते तैयार किए हैं। अरुण जी आज यहां भी जहां भी होंगे वो संतुष्ट होंगे कि वो जिस मिशन में भागीदार रहे उसका लाभ आज देश को मिल रहा है। जीएसटी हो या आईबीसी, इनको लेकर सालों तक चर्चा हुई, आज इनकी सफलता हमारे सामने है। कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करना हो, कॉर्पोरेट टैक्सेस को कॉम्पिटिटिव बनाना हो, स्पेस, कोल माइनिंग और एटॉमिक सेक्टर्स में को खोलना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म आज 21वीं सदी के भारत की सच्चाई है। साथियों, हमारी पॉलिसी मेकिंग पल्स ऑफ द पीपल पर आधारित है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनते हैं, उनकी आवश्यकता, उनकी आकांक्षाओं को समझते हैं। इसलिए हमने पॉलिसी को पॉपुलिस्ट इंपल्सिस के दबाव में नहीं आने दिया। पीपल्स पल्स के अनुसार फैसले लेना और पॉपुलिज्म के सामने हथियार डाल देने में क्या फर्क होता है, ये कोविड काल में हिंदुस्तान ने देखा है, और देखा है नहीं, दुनिया को दिखाया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या कह रहे थे?
पैंडेमिक के समय। जब पैंडेमिक आई तो पूरी दुनिया में बड़े बेल आउट पैकेज के लिए, डिमांड ड्रिवन रिकवरी के लिए पॉपुलिस्ट इंपल्स था, हम पर भी दबाव था और हमारी आलोचना होती थी, ये कुछ कर नहीं रहे, कुछ दे नहीं रहे, पता नहीं क्या कुछ हमारे लिए कहा गया। ये भी कहा गया कि लोग चाहते हैं, एक्सपर्ट ये चाहते हैं, बड़े बड़े विद्वान ये चाहते हैं, लेकिन भारत दबाव में नहीं आया। उसने एक अलग अप्रोच अपनाई और बहुत समझदारी के साथ, शांत मन से अपनाई। हमने पीपल फर्स्ट अप्रोच के साथ गरीब को सुरक्षा दी, महिलाओं, किसानों, एमएसएमई पर ध्यान दिया। हमने दुनिया से अलग इसलिए कर पाए क्योंकि हमें पीपल्स पल्स यानी जनता क्या चाहती है, उसकी क्या चिंता है, इसका एहसास है। इसलिए भारत की रिकवरी और बाकी दुनिया की रिकवरी में जो फर्क है वो हम साफ देख सकते हैं। साथियों, मैं अक्सर मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का आग्रह करता रहा हूं। हमारी सरकार ने ऐसे 1,500 कानूनों को खत्म कर दिया है जो लोगों के जीवन में अनावश्यक रूप में दखल दे रहे थे। 1,500 कानून। और मुझे याद है 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम कैंडिडेट बनाया था, 2014 में चुनाव होना था, तो यही दिल्ली में ही व्यापार जगत के लोगों ने मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया था और वो बड़ी थोड़ा गर्म मिजाज का वातावरण था। क्या करोगे, डिकना करोगे, फलाना करोगे, सब पूछ रहे थे। ये कानून बनाओगे, नहीं कानून बनाओगे, था बड़ा दबाव था। कैंडिडेट था चुनाव के दिनों में, हम भी तो जरा मैंने कहा देखिए आप कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं, मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा। नए बनाने की गारंटी नहीं देता हूं, खत्म करूंगा। और पहले 5 साल में 1,500 कानून खत्म करने का काम पूरा कर दिया। साथियों, जो कानून जनता सामान्य पर बोझ बनते हैं। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, हमारी सरकार ने 30,000 से ज्यादा, यानी आंकड़ा भी आप चौंक जाएंगे जी, 30,000 से ज्यादा ऐसे कंप्लायंसेस को भी कम कर दिया है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और ईज ऑफ लिविंग में बाधा बने हुए थे। 30,000 कंप्लायंसेस खत्म कर देना यानी जनता जनार्दन पर कितना अभूतपूर्व विश्वास का युग आया है, उसका नतीजा होता है कि हम कंप्लायंसेस के बोझ से जनता को मुक्त कर रहे हैं। और मैंने ऐलान के लिए पर कहा था कि मैं चाहता हूं सरकार लोगों की जिंदगी से जितनी बाहर चली जाए हमें निकालनी है। लोगों की जिंदगी में सरकार 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 का प्रभाव कम से कम हो, लेकिन जिसको सरकार की जरूरत है उसको सरकार का अभाव न हो, ये दोनों विषय को लेकर के चलने का हमने प्रयास किया है। आज मुझे आपको ये बताते हुए संतोष है कि मिनिमम गवर्नमेंट की अप्रोच मैक्सिमम आउटपुट्स और मैक्सिमम आउटकम्स भी दे रही है। हम बहुत तेजी के साथ अपनी कैपेसिटी का विस्तार कर रहे हैं और इसके नतीजे आपके सामने हैं। कोविड वैक्सीन का ही उदाहरण ले, हमारे देश के प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन उनके पीछे पार्टनर इन प्रोग्रेस के रूप में सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रही थी। वायरस आइसोलेशन से लेकर स्पीडी ट्रायल तक, फंडिंग से लेकर रैपिड रोल आउट तक जो कंपनियां वैक्सीन का निर्माण कर रही थी उन्हें सरकार का भरपूर सहयोग मिला। एक और उदाहरण हमारे स्पेस इकोसिस्टम का है। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे विश्वसनीय और अत्याधुनिक स्पेस सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। इस क्षेत्र में भी हमारा प्राइवेट सेक्टर इकोसिस्टम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन उनके पीछे भी पार्टनर इन प्रोग्रेस के रूप में
सरकार की पूरी शक्ति है जो उन्हें हर सुविधा और जानकारी उपलब्ध करने में मदद कर रही है। जब हम भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का हल लेते हैं तो हमारे यहां फिनटेक के साथ ही डिजिटल पेमेंट से जुड़े कई प्लेयर्स हैं, लेकिन यहां भी देखें तो इनके पीछे जेम ट्रिनिटी, रुपे, यूपीआई और सपोर्टिव पॉलिसीज का मजबूत आधार है। यहां मैंने केवल कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं, लेकिन मैं इन्हें दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय मानता हूं। एकेडमिक वर्ल्ड को गहराई में जाने के लिए निमंत्रण देता हूं। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट को मैं निमंत्रित करता हूं। आइए उसकी बारीकियों को देखिए। इस विशाल देश, अनेक वित्त आवश्यकताएं, उन सब के बावजूद भी हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रकार से देखें तो अब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या सरकारी वर्चस्व वाले एक्सट्रीम मॉडल्स की बातें पुरानी हो चुकी है। अब समय है कि सरकार की प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर इन प्रोग्रेस मानकर उन्हें प्रोत्साहित करें और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, सबको साथ लेकर चलने, देश के पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पर भरोसा करने की यही स्पिरिट है जिसके कारण आज भारत में ग्रोथ के लिए अद्भुत उत्साह दिख रहा है। आज हमारा एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है। सर्विस सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। मोबाइल फोन सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धि हुई है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब मैं इस कोरोना कालखंड में टॉय को लेकर के मैंने समिट की थी, खिलौने, तो कई लोगों को लगा होगा ये पीएम को कभी झाड़ू की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, टॉयलेट की बात कर रहा है, टॉय की बात कर रहा है। कईयों को, क्योंकि अब तक हम उन बड़ी बड़ी बातों में फंसे रहे हैं तो मेरी बातें उनके गले बैठती नहीं थी। सिर्फ खिलौनों के ऊपर मैंने ध्यान दिया, खिलौने बनाने वालों पर ध्यान केंद्रित किया, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, इनोवेशन पर ध्यान दिया, फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ ध्यान दिया। अभी तो 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। मेरे देशवासी गर्व करेंगे कि टॉयज का इंपोर्ट इतने कम समय में इतना घट गया, वरना हमारे यहाँ हर घर में खिलौना विदेशी हुआ करता था जी। वो इतना इंपोर्ट कम हुआ है। इतना ही नहीं, भारत के खिलौने, भारत के टॉय पहले जितना इंपोर्ट होता था उससे ज्यादा आज एक्सपोर्ट होने लग गए। यानी कितना बड़ा पोटेंशियल अनटैप था। जैसे आपने कहा टूरिज्म, सचमुच मैं सहमत हूं आपसे। भारत के टूरिज्म की संभावना इतनी अपार है, लेकिन हम एक ही जगह पे अटक गए थे। हिंदुस्तान के पूर्ण रूप में विश्व के सामने ले जाने का हम पता नहीं, हमारी मानसिकता ही वो खो चुकी थी। और मैं तो विदेश के मेहमान जो भी आते हैं तो हिंदुस्तान के किसी न किसी स्थान पर ले जाने का आग्रह रखता हूं। क्या मेरे टूरिज्म को, इस बार हमने योगा का कार्यक्रम किया तो 75 आइकॉनिक स्थान पर किया ताकि लोगों को पता चले कि टूरिज्म के ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन है हमारे यहाँ। टूरिज्म की संभावनाएं, आपने सही फरमाया, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है भारत। साथियों, हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। यानी हमारे ग्रोथ इंजन से जुड़ा हर सेक्टर आज पूरी क्षमता से चल रहा है। साथियों, आजादी का यह अमृत काल भारत के लिए अनगिनत नए अवसर लेकर आ रहा है। हमारा निश्चय पक्का है, हमारा इरादा अटल है। मुझे विश्वास है हम अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे। 21वीं सदी में उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जिसका भारत हकदार है। और जैसा थर्मन जी कुछ चैलेंजेस के लिए बता रहे थे, मैं मानता हूं चुनौतियां है, लेकिन अगर चुनौतियां है तो 130 करोड़ सॉल्यूशन भी है।
ये मेरा विश्वास। और उन विश्वास को लेकर के चुनौतियों को ही चुनौती देकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं, और इसलिए हमें इंक्लूजन का रास्ता लिया है और उसी रास्ते से ग्रोथ को भी पाने का इरादा रखा है। एक बार फिर अरुण जी को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थर्मन जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए धन्यवाद करता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी से और सीनियर मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर और अन्य मंत्रीगण से अनुरोध करूंगा कि वो ऑडियंस में अपना स्थान लें। आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस टू टेक देयर प्लेस अमंग द ऑडियंस। With the context set by Senior Minister, Honorable Shri Shanmugaratnam, on the theme of today's lecture and an inspirational address by Honorable Prime Minister, now is the time for a brief discussion. And we have with us Shri N.K. Singh, Shri Arvind Panagaria, and Shri Matthias Corman. I will request all three of them to take their seats on the dais. Shri N.K. Singh, as we are all aware, is a prominent Indian economist, former chairman of Finance Commission, and president of Institute of Economic Growth. Shri Arvind Panagaria is a prominent Indian-American economist, published author, and has served as the first vice chairman of Niti Aayog. Shri Matthias Corman is a distinguished diplomat who currently serves as Secretary General of Organization for Economic Cooperation and Development. Over to the panelist to take us through the panel discussion. Thank you very much. I'm indeed privileged and honored for this opportunity for moderating a brief panel discussion after the far-reaching address of the senior minister, embellished by the Prime Minister's visionary address. So, looking at what Senior Minister said, I'm first going to request the two distinguished panelists who have already been introduced to make their brief introductory remarks in the context of the broad theme outlined by the Senior Minister and in many ways given an Indian dimension. I request them to make their intervention brief so that we are also able to have a Q&A a little after that, and the time will be adequate. So first, can I request you, Matthias, and you have already been introduced, but may I just add that you were indeed one of the personal friends of Mr. Jaitley, and there was a common passion which you shared, the passion for cricket, coming as you do from Australia. So, Matthias. Thank you very much, NK. It's a pretty hard act to follow after Senior Minister Tharman and indeed after Prime Minister Modi. But look, it's a great privilege to be here. It's great to see Finance Minister Nirmala Sitharaman and of course Madam Jaitley and friends of family and friends of Arun.
It is an honor to be offered the opportunity to say just a few words on the occasion of this inaugural Arun Jaitley lecture. I admired Arun greatly. Yes, of course, in terms of what he achieved as finance minister, and I think Tharman would agree that among finance ministers, Arun Jaitley was like a global rock star. But more importantly, for me, I admired Arun Jaitley because of who he was and because of the incredible richness of the life he lived. Throughout his life, Arun was a man of great courage, of great moral integrity, and indeed of great generosity, including to me. And so I'm so pleased that you have established this memorial lecture in his honor, and I'm so pleased that you have chosen such a distinguished leader in Tharman to give the inaugural lecture. Under Prime Minister Modi's leadership, Arun steered India's fiscal and structural modernization and reform agenda. He secured, as has been mentioned, major tax reform with the implementation of a national goods and services tax, replacing a multitude of indirect national and state taxes. He pursued a series of other reforms, but Arun was a strong voice for India on the world stage. And from the OECD's point of view, from the point of view of the Organization for Economic Cooperation and Development, we benefited greatly from our collaboration with him. In particular, he worked with us on international tax reform, with India formally joining the OECD G20 initiated convention to prevent base erosion and profit shifting. Moving through things quickly, as I've been asked by my friend NK to do. Arun, and as has been touched on by Tharman, had a very clear understanding that to be sustainable and sustained, economic expansion had to be inclusive, that the benefits of economic development and growth had to be widely shared and had to reach the poor and the most vulnerable. But he also understood, and the Prime Minister has really honed in on this point in his address to us tonight as well, to drive inclusion and social cohesion, we need economic development and growth. And Arun advocated for growth as a mechanism to pull as many people out of poverty as possible, to improve people's quality of life, to improve the opportunities for people to get ahead, always conscious of the need to make growth inclusive and not leave anyone behind. Equality of opportunity through better access to essential services, to education, to health, to employment, is what underpins the aspirational promise of merit-based social mobility in free democratic nations. Fully utilizing our human capital is central to driving better opportunities for all, and India has made incredible strides in this regard. 75 years on from independence, India is not only the world's largest democracy, but also a major, strongly growing, positive force in the global economy. Your strong growth, among the highest in the world over the past 2 decades, has already lifted hundreds of millions of people out of poverty. And as has been referenced, the government of India under Prime Minister Modi's leadership has, of course, great ambitions to keep driving strong growth, but growth which is stronger by being inclusive and sustainable. There is much work to be done in India and globally. Tharman is absolutely right. The world needs Indian leadership to help solve some of the evolving global challenges of our time. I was privileged to have the opportunity this morning to discuss this with Prime Minister Modi. The world would benefit so much from India's cooperation-driven approach to multilateralism, helping to bridge some of the current divides in the world to help solve some of the challenges and problems in front of us. As an organization committed to supporting better international cooperation, to develop better policies for better lives, we look forward to working with Prime Minister Modi and his government in the course of India's G20 presidency next year to do exactly that. And thank you for giving me the opportunity to say a few words. Thank you very much, Matthias. Thank you for being so disciplined and adhering to the somewhat limited time we have.
I now request the distinguished co-panelist Arun Pangaria to make his observation. Arun? Thank you, NK. Let me also join everybody in saying that how privileged I feel to be here, how honored I feel, generosity of the Prime Minister. I got to serve alongside Jaitley ji, and all the qualities that have been described of him. I had the chance to observe those firsthand. And let me also say that I was a great beneficiary during the 3 years that I was serving in the government of the helpful nature and all the assistance that Jaitley ji was always there to give me whenever I sought his help. He never failed, absolutely never. Very quickly, just to add my own remarks here, maybe I will take one specific theme that came from the distinguished lecture. This was about the deep legacies that Mr. Shanmugaratnam mentioned. One particular deep legacy that we really inherited from the beginning, the way that the Indian growth process was unfolded, had to do with very initial emphasis on heavy industry. And here I want to draw this particular, that growth is important for inclusion. That we understood. From the very early on, you go back to Congress's discussions in 1930s and all, that growth was critical. Without growth, we could not uplift people out of poverty. I think what got really missed is that the growth process itself has to be inclusive for growth to be sufficiently high that you actually achieve the inclusion that is essential. We emphasized heavy industries. Savings were very low, 7% of the GDP at the time, a very low GDP to begin with. So practically those savings got invested in 3 or 4 steel mills. Rest of the population workforce was left completely out of the benefits that could come from growth. So some growth did happen, but it was growth without inclusion. Therefore, it was not very high growth, 4%, 5%. And all the reforms that we have then been doing starting from 1991 and very much accelerated in the last 8 years have to do with making the growth process itself inclusive. So we have understood that health, education, etc. are essential for inclusion, but it is the growth process itself. What is the quality of growth? Does growth bring the workforce directly into economic mainstream is critical actually to achieving high growth. And this is what the East Asian economies, so if I could call this, India's model is the Nehru model versus the East Asian one as the Lee Kuan Yew model, then the Lee Kuan Yew model kind of understood this, and therefore it was driven by very much labor-intensive manufacturing growth, which brought the large part of the population into mainstream of the growth. And so the growth itself could be actually very high, 8 to 10%. And so that, of course, gave the revenues also for the government to promote rapidly education, health, and all the other social expenditures. And so I think this is the big difference now, with the GST, with the labor law reforms that have been done, for 15 years, we have been arguing for those, the economists. Finally, Prime Minister Modi has also done those labor law reforms, the corporate profit tax reform, the definitional change of all these small, medium, and micro firms, which now open up those categories much wider. All of these facts make, I think, for inclusion in the growth process, and therefore not only that would promote immediately inclusion, but it will also give rise to, in the forthcoming 25 years, significantly higher growth rates, and therefore allow us to promote inclusion yet more. So I'll stop there. Thank you. Thank you very much. Thank you, Arvind. I have this great privilege of asking 1 or 2 questions, if I might. So drawing some inspiration from the senior minister's speech and the Prime Minister's vision, particularly in converting the great challenge of the pandemic into a historic opportunity
to take forward our entire reform strategy. The senior minister, you referred to an unusual confluence of challenges which the global economy faces. And these challenges which you mentioned are several. These challenges which entail national security, driven by the unusual circumstances which we have obviously compelled many nations, particularly nations in Europe, to become increasingly inward-looking. India has avoided that degree of conflict between pursuing with economic reform strategy, along with ensuring that the internal security of India and some of the important challenges do not remain underaddressed. Matthias, looking at your own experience, how would you see the symmetry between the challenge of national security and the challenge of ensuring that the forces of globalization, particularly international trade, value-added chain, comparative factor advantages, comparative costs, which are productivity enhancing, are in some ways or pursue the same common path? And I'm going to ask you, Arvind, the same question, because you keep writing brilliantly on the need to open up on the trade sector. Do you see any contradiction between the two? But first to you, Matthias. Well, the first point I would make is that while the global rules-based trading system has for some time been under pressure, and some of these pressures have come to the fore in the context of the pandemic, and also more recently in the context of the war in Ukraine, with supply chain challenges and so on. I mean, overall, our global markets continue to perform very well. And I agree with Tharman. I mean, global trade is growing, and I still believe that countries around the world doing more business with each other and increased economic integration, increased alignment of economic interests is a very powerful driver, not only of a lifting of living standards, but also of increasing stability and peace. Now, of course, I mean, there are challenges and there are things that need to be resolved. And indeed, I mean, it's important that there is a sustainable and sustained new consensus around what the rules of the game ought to be in the current global context. But the principles of countries around the world and people around the world contributing into global value chains, what they can do best at the lowest possible cost, I mean, I still think is a principle that works very well. And in the context of the pandemic, while much has been said, global value chains were much more resilient than what might have been said from time to time. And if supply chains were under pressure in the latter part or in the second year of the pandemic, it was because the recovery was so strong and the composition of that strong recovery in demand was so different that the supply logistics in the context of a pandemic were finding it hard to keep up. But fundamentally, our global market is working well. There are things that need to be adjusted. And I think countries around the world doing more business with each other, investing more into each other's economies through the free flow of capital is a powerful driver for increased peace and stability. Arvind? So, let me make 2 points, which have been implicitly made here. One, increased risk always requires diversification. That's true. And so today, a lot of the multinationals are looking for diversification to other countries. And if you know, China has been the center of their activity for last 2 decades, but now they seek diversification. That opens new opportunities. So I think every challenge comes with an opportunity. So that's the first point. But the second one is, which of course the senior minister very much expounded, that on the surface it seems that there's a lot of backlash on trade and globalization going on, that all the trade war that broke out between the United States and China. But if you actually look at the outcomes, it is remarkable how, in spite of COVID and these tensions, trade has continued to flourish. So, the decline in trade during COVID year, 2020,
was about 6%, and it bounced back very quickly. By the end of the last quarter of 2020, trade was back, and today, total trade is $28.5 trillion, which is 3 trillions more than the pre-COVID peak that we had observed before. So I think, opportunities will remain. Economic incentives, profit incentive is just too powerful. And today, in spite of everything else, the economy is far more open than it was when Korea's, Taiwan, Singapore's, etc., made their rapid growth. So I will not be pessimistic. Thank you. My second question is that one of the themes of the senior minister was the challenges of an orderly transition to an era of sustainable growth, particularly climate. You mentioned about the far-reaching contribution made by Prime Minister Mr. Modi at the Glasgow 26 when he outlined the Panchamrit, which became in some ways the mantra which guided the Glasgow 26. Let me ask you, Matthias, that considering the fact that you realize that very large capital is necessary, and considering the limits of what public outlays can do, and considering the fact that unfortunately developed countries have made enormous promises, but have not followed those promises with the necessary transfer of capital, it's necessary to incentivize private capital outlays, which will be necessary to blend with public outlays for reaching those ambitious targets. How do you think the international multilateral order and lending institutions can be restructured for meeting a better partnership between enhanced public outlays with enhanced private capital flows, particularly on the issues of risk mitigation for private capital? Thank you very much for that question. Firstly, I mean, developed economies did make promises to provide and mobilize $100 billion US a year in climate finance for developing economies, and that was meant to happen by 2020. It didn't happen by 2020, but we are tracking this, and we now believe, based on the data that we have in front of us, that that goal will be reached by 2023 and then exceeded from there on in. But that's not going to be enough. I mean, we will need trillions of investment, and you're right. I mean, we will need to find ever better ways to leverage public investment to leverage into additional private investment, and also to pursue blended finance opportunities to ensure that we can get the level of investment that is required. But what is even more important on top of this, when countries around the world, including India, have made commitments to transition to net zero emissions. Many countries by 2050, China by 2060, India by 2070. So there's now a trajectory, there's a pathway, there's a transition. And you know, the problem-solving spirits around the world, the entrepreneurial spirits around the world, have to find ways that we can achieve that transition in the best, most sensible way possible. But also, different countries around the world using different approaches, taking into account different circumstances and different opportunities. All of that needs to be somehow brought together in a globally more coherent approach, where we ensure that individual efforts in individual countries contribute to solving the actual problem that we're trying to solve. And I think that's where there is scope for better dialogue, sharing of information, sharing of data of what works best, what doesn't work so well, sharing of technology to make sure that we really give every country around the world the best possible chance to get to the ultimate destination in the best possible way, but also to avoid negative spillovers from uncoordinated action. And that is an area in which we believe the OECD, together with India and others, might be able to help. Arun, before you respond, I'm grateful to Matthias. One of the issues which really is very troublesome is a just transition, an orderly just transition. And the resiling of developed countries from commitments made long ago necessitates obviously a more innovative approach. And perhaps you could say what those innovative approaches can be.
That's a very tough one, NK. If we really know the answers to that question, He's we been would have thinking all night probably about how he been can ask us some tough on the way to questions. solution. But one of the things I think that should be done, if there is some will, then one of the that energy efficiency provides a great avenue to bring in carbon emissions down. A lot of new technologies are coming, but these are very high royalties to be paid. I think we ought to use some of the climate finance provided by the foreign governments, by the richer countries, which have been responsible for much of the pollution that exists in the environment today, and use those to actually pay part of these royalties and make the technologies available to the developing countries at either lower cost or free of charge. I think that will go a long way towards solving the problem. Thank you very much. I think that I wish to now thank both the distinguished panelists for not only their valuable observations, but for making their responses. We bring this session now to a close by expressing my gratitude to both of you for having really, in many ways, genuinely sought to answer some of these complex challenges. Thank you very much. I thank Honorable Prime Minister, Senior Minister of Singapore, all the panelists, Senior Ministers of Government of India, family members, diplomats, and other dignitaries. Thank you very much for joining us on this inaugural Arun Jaitley Memorial Lecture. I'll request everybody to remain seated. First, Prime Minister will leave for the next event with the international delegates of KEC in the same building. Thereafter, international delegates of the KEC will be requested that to move to the photo session, and thereafter, then the guest can leave thereafter. Thank you. Ladies and gentlemen, everybody kindly remain seated. Requesting everybody to kindly remain seated. We would request no movement in the hall. तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन पे, जहां पे पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में तालियों के प्रणाम से आप माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में उनका मार्गदर्शन हमारा पाथेय बनेगा, इस विश्वास के साथ ही हम माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और मंचासीन समस्त अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शिक्षा मात्र शिक्षित करने के लिए नहीं, या उसका उद्देश्य सिर्फ रोजगार के लिए योग्य बनाना ही नहीं, बल्कि तेजी से बदलते समय और जरूरतों के अनुसार
ग्लोबल सिटीजन तैयार करके उन्हें राष्ट्र के निर्माण से जोड़ना भी है। और इसी दिशा में एक कदम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा का ये महायज्ञ है, ये समागम। प्रारंभ हम करेंगे सरस्वती वंदना से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय की छात्राएं प्रस्तुत कर रही हैं सरस्वती वंदना। जगमग सकल ये जग कर दे, मेरे सिंधु भर ले। हे माँ जगमग सकल ये जग कर दे, पथरालोकित हो सब जन का, पथरालोकित हो सब जन का। सत्य मार्ग को ही अपनाए, सत्य मार्ग को ही अपनाए। वरदे वरदे हे माँ शारदे, वरदे वरदे हे माँ शारदे। विद्या बुद्धि खाओ समागम, सकल जगत को सजग कर दे, सकल जगत को सजग कर दे। मेरा सिंधु भर ले, हे माँ जगमग सकल ये जग कर दे। सत्य हो जीवन और आचरण, सत्य हो जीवन और आचरण। विद्या का अभिमान ना होवे, विद्या का अभिमान ना होवे। श्रम का फल सबको मिल जाए, श्रम का फल सबको मिल जाए। ऐसी सफल साधना होवे, ऐसी सफल साधना होवे। वरदे वरदे हे माँ शारदे, वरदे वरदे हे माँ शारदे। कलुष भावना मन में न आए, पावन सबके कर्म कर दे, पावन सबके कर्म कर दे। मेरे सिंधु भर ले, हे माँ जगमग सकल ये जग कर दे, जगमग सकल ये जग कर दे, जगमग सकल ये जग कर दे। प्रोफेसर रवि भटनागर की स्वर रचना और प्रोफेसर संगीता पंडित के निर्देशन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ये छात्राएं आपके सम्मुख सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही थी। काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हर बार काशी को एक नया फ्लेवर और नया कलेवर देता है। उनके सानिध्य और सामीप्य की कल्पना से ही काशी उल्लसित हो जाती है, हम सब आह्लादित हो जाते हैं। मैं हम सब की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन भी करें।
और आप सब अपनी भावनाओं को तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन। और अब मैं माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वो आज के इस अवसर पर हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी प्रस्तुत करें। भारत के सबसे लोकप्रिय जननेता यशस्वी प्रधानमंत्री जो लोकसभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में मेरे सहयोगी डॉक्टर सुभाष सरकार जी, अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय रजनी तिवारी जी, देश की वरिष्ठ विद्वान शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, देश भर के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति और निर्देशक समूह, प्राध्यापक समूह, विद्वानगण, शिक्षाविद, आमंत्रित अतिथिगण एवं मीडिया के मित्र, ऐतिहासिक शहर काशी में शिक्षा जगत के इस भव्य सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। इसीलिए मैं इस शाश्वत शहर के आराध्य काशी विश्वनाथ की चरण में विनम्र प्रणाम करते हुए अपनी बात आरंभ करता हूं। यह सबसे पुरानी जीवंत शहर है जो प्राचीन काल से ही ज्ञान एवं सिखाने का विश्व विख्यात केंद्र रहा है। हमारे देश के युवाओं के भविष्य और उच्च शिक्षा पर विमर्श के लिए वाराणसी सबसे बेहतरीन स्थान है, क्योंकि यहाँ के कण कण में हमारी प्राचीन धरोहर, संस्कृति एवं ज्ञान राशि समाहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दार्शनिक दस्तावेज है, फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। मेरा मानना है कि संविधान के बाद एनईपी 2020 एक ऐसा दस्तावेज है जिसे देश भर में कई स्तर पर विचार विमर्श, चर्चा, जन भागीदारी और संवाद के बाद आकार दिया गया है। संविधान के समान ही एनईपी 2020 हमारी देश की दुविधा और संदेह से बाहर निकालने का विचार, आत्मा, बुद्धि और कार्य में भारतीय होने का गहन गर्व पैदा करता है। एनईपी की घोषणा के बाद से ही हम उसी के क्रियान्वयन के लिए हर कदम पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलते रहा है और आज हम सभी का एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य, उनके आशीर्वाद, स्नेह एवं मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हम सभी में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया है। पूरा देश शिक्षा जगत की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के मुख्य सचिवों ने देश भर में एनईपी के क्रियान्वयन की गति देने के बारे में विचार विमर्श किया था। इसी विचार विमर्श को अगले चरण की रूप देने में हम सब अखिल भारतीय शिक्षा समागम के लिए एकत्रित हुए हैं। इस 3 दिनों में आप सभी को कुछ विषय पे गहन विचार विमर्श करने के लिए अनुरोध करता हूं कि हम अपने समय की जरूरत के अनुसार अपने छात्रों के सही मायने में ज्ञान और कौशल्य दे रहे हैं। क्या हमारी पाठ्यक्रम हमारे युवाओं की आकांक्षा को अनुरूप है? क्या हमें अपनी कैरिकुलम, कोर्स और उच्च शिक्षा, कौशल तथा अनुसंधान के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है? एनईपी 2020 हमें यथास्थिति और कठोरता को तोड़ना तथा प्रगतिशील मानसिकता को तथा
साथ अपने राष्ट्र के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव की ओर बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। हमारे देश में 15 से 25 आयु वर्ग में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, यानी लगभग 25 करोड़ आबादी है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहेगा, हमारे पास 25 साल ही रहेगा, जिसे हमें अमृत काल भी कहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए हम सब युवा की ऊर्जा, क्षमता और पूरी तरह से उपयोग कैसे करें और ज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, यही NEP 2020 की दिशा दर्शन है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान ने केवल विद्यार्थी और शिक्षकों के जीवन की बेहतरी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र में सभी जीवन के कल्याण के लिए उद्दिष्ट है। हमारी राष्ट्र की ज्ञान परंपरा की जड़ें कई सदियों गहरी है और NEP इसी भारतीय ज्ञान परंपरा की आधार पर मजबूत नींव स्थापित करके देश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की स्वर्णिम आकार देना चाहती है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक है और एक ज्ञान समाज के रूप में उभरती अर्थव्यवस्था को समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में कैप्टन बनना स्वाभाविक है। देश युवाओं को केवल जॉब सीकर के रूप में संतुष्ट देखने की बजाय भविष्य में जॉब क्रिएटर्स के रूप में देखना चाहती है। बंधी बंधाई अथवा स्थापित सीमाओं में आगे बढ़ना, पुशिंग द बाउंड्रीज, असंभव का सपना देखना, ड्रीमिंग ऑफ इम्पॉसिबल, और फिर उसे पूरा करना ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। देश की सकारात्मक सोच, साथ व्यापक परिवर्तन की चाह रखने वाले युवाओं की जरूरत है, जो किसी भी स्थिति में समझौता करने की बजाय उसे बदलने की साहस रखते हैं। इसी भव्य अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उपस्थित लोगों की यह जिम्मेवारी है कि वो यह सुनिश्चित करें कि सकारात्मक सोच एवं ज्ञान की दुनिया में शिखर पर जाने की यह इच्छा निरंतर रहे और भविष्य के लिए भारत के पथ को रोशन करने के लिए मशाल के रूप में कार्य करें। तो हमें यहाँ वाराणसी जैसे सबसे पवित्र शहर में NEP क्रियान्वयन और हमारा देश की जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो विकास के नए आयामों और नए कीर्तिमानों के साथ उत्तर प्रदेश की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। सौभाग्य है हमारा कि इस महत्वपूर्ण समागम के आयोजन का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को, हमारी काशी को मिला। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण श्री सुभाष सरकार जी, माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, उच्च शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, ड्राफ्टिंग कमेटी NEP के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, देश भर के आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षाविद, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना की, उनकी स्वयं की काशी में मैं प्रदेश सरकार की ओर से, देश भर से आए हुए आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही आप सभी सम्मानित शिक्षाविदों का भी काशी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक रही है। यह विद्या की नगरी है और हम सब आभारी हैं कि जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी, तब भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही नए भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत रख रहा था। देश के अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रस्तुत कर रहा था। और आज ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के दृष्टि से देश भर के सभी शिक्षाविद इसे लागू करने और इसकी भावी योजनाओं पर व्यापक मंथन करने के लिए काशी की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। काशी और भारत की परंपरा वैसे भी विद्या से जुड़ी हुई रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के उस वैदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यह उद्घोष करती है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान को सभी दिशाओं से आने के लिए हमें द्वार खुले रखने चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश की आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वह ज्ञान के सभी दिशाओं से आने के द्वार खोले हैं। मैं इसके लिए देश भर के आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आभार इस बात के लिए भी कि देश भर के शिक्षाविद प्राचीन विद्या की इस नगरी में और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस काशी में, जहां पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में 1916 में इस काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वहां पर आज शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मिलकर के इस शिक्षा महासमागम के आयोजन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्यापक मंथन के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। निश्चित ही मंथन की इस परंपरा से कोई अमृत जरूर निकलेगा और वह द्वार पहले ही, वह रास्ता पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबको प्रस्तुत कर चुकी है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में इस शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातक स्तर पर लागू कर चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सभी 30 जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं और प्रदेश के सभी 35 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में भी इसे लागू करने के साथ ही तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यह व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है और जब देश भर के आप सभी शिक्षाविद यहां पर उपस्थित हुए हैं, मेरा अनुरोध होगा, कुछ चीजों को लेकर के अक्सर हम लोग देखते हैं। एक, हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को, शिक्षा के केंद्रों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार और शोध के लिए अपने आप को तैयार करना होगा।
दूसरा, शासन की योजनाओं से अपने आप को वैराग्य भाव रखने की बजाय उन शासन की योजनाओं के साथ जुड़ते हुए छात्र छात्राओं को उन योजनाओं के साथ अगर हम विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में पहले दिन से ही लगना प्रारंभ कर देंगे तो जब वह अपनी डिग्री लेकर के बाहर निकलेगा तो उसके सामने अपने जीवन की अनंत संभावनाओं के द्वार स्वतः खुले हुए दिखाई देंगे। और यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की प्रेरणा तो हमें दे ही रही है, लेकिन आप सभी शिक्षाविदों के माध्यम से इसे लागू करने में और मजबूती के साथ एक मदद प्राप्त हो सकती है। मैं एक बार फिर से इस 3 दिवसीय शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। भारत खड़ा है अपने गौरवशाली इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर। देश के अमृत काल की यात्रा हो गई है आरंभ। हमारे युवा अपने सपनों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए हैं आतुर। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराए। इस नीति के क्रियान्वयन ने देश के युवाओं में एक नया जोश भर दिया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था से उन्हें पहली बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पढ़ने का मौका मिला है। ऑनलाइन एवं ओपन डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार हुआ है। 75,000 विद्यार्थियों को गति शक्ति के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनोवेशन एवं स्टार्टअप, शिक्षा में मल्टीलिंगुअलिटी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। 2 वर्षों में लाए गए इन सुधारों को कई राज्यों ने, कई संस्थानों ने लागू कर दिया है। अब देश भर के शिक्षाविद और नीति निर्माता इस बात पर विमर्श कर रहे हैं कि इन सुधारों को और गति कैसे दी जाए। पिछले महीने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों के मुख्य सचिवों ने इस विषय में चर्चा की। अब इसी चर्चा की अगली कड़ी के रूप में आज वाराणसी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समागम में उपस्थित होने वाले वाइस चांसलर्स, IIT, IIM के निदेशक तथा देश भर के शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं को नीति के क्रियान्वयन के विषय में मार्गदर्शन करेंगे। प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री समागम में भाग लेंगे। इस चर्चा से नीति के क्रियान्वयन को नई दिशा, नई ऊर्जा मिलेगी और युवाओं के सपनों को मिलेगी ऊंची उड़ान। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने चरित्र, विचार और जीवन से हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा तो देते ही हैं, साथ ही राष्ट्र के निर्माण के संस्कार भी देते हैं। मानवीय मूल्यों में विश्वास भी जगाते हैं और अपनी जमीन से जुड़कर आसमान को छूने का साहस और बल भी देते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका उद्बोधन हर बार हमें एक नई अंतर्दृष्टि
और दिशा देता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से एक बार पुनः उन्हें नमन। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, सरकार के अन्य मंत्रीगण, इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी वाइस चांसलर्स, शिक्षा संस्थाओं के निर्देशक, सभी शिक्षकगण, शिक्षाविद, देवी और सज्जनों, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का यह आयोजन उस पवित्र धरती पर हो रहा है जहां आजादी से पहले देश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये समागम आज एक ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत काल में देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है, हमारी युवा पीढ़ी पर है। हमारे यहाँ उपनिषदों में भी कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। मैं ईश्वर अवसर पर महामना मालवीय जी के चरणों में नमन करते हुए इस आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं, मेरी काशी में आप पधारे हैं, तो एक प्रकार से मैं होस्ट भी हूं। आप इन सब के साथ साथ मेरे भी मेहमान हैं। मुझे विश्वास है कि व्यवस्थाओं में ज्यादा आपको असुविधा नहीं होगी। प्रबंध करने का सबने भरपूर प्रयास भी किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो वो दोष मेरा रहेगा। और एक होस्ट के नाते कोई भी आपको असुविधा हो जाए तो उसकी क्षमा मैं पहले से मांग लेता हूं। साथियों, मैं अभी एक कार्यक्रम करके आ रहा हूं।
यहाँ मध्याह्न भोजन के लिए एक सेंट्रलाइज किचन का काम था, लेकिन वहां मुझे मेरी काशी की सरकारी स्कूल के 10-12 साल की उम्र के बच्चों के साथ गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिला। और वहां से निकल करके यहाँ आया हूं। और मैं उनसे सुन करके आया हूं और आपको सुनाने आया हूं। और मुझे कहना होगा, और मैं तो चाहूंगा जब मैं अगली बार आऊंगा तो जिस स्कूल के बच्चों से आज मुझे मिलना हुआ है, मैं उनके जो टीचर्स हैं उनको मिलना चाहूंगा।